Hey, hello everyone. I hope that I am audible and clearly visible. Listener एक बार लिख दो. I will get a clarification quickly. सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा? Great, thanks. Okay, so it was the most awaited lectures for some of the people, I believe. क्योंकि आज थोड़ा कोडिंग डिस्कस करेंगे हम लोग. तो या मैंने थोड़े बहुत कोड्स किए थे इस बेसिकली सेशन के लिए प्रिपेयर. Need a help? Please take the session on graph rag. Okay. श्योर प्रणय. सो करेंटली तो ये हमारे स्कोप में नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली प्रॉमिस यू कि मतलब मैं सर से बात करके perhaps we can arrange one more session, or we can just consider transferring this to a new course जहाँ पे हम लोग थोड़ा एडवांस रैग और मॉड्यूलर रैग अभी भी हम लोगों ने कवर कर दिया है वैसे बहुत, बट और थोड़ा डेप्थ में जाके रैग को सॉल्व करेंगे और थोड़ा मतलब इम्प्लीमेंटेशन फोकस रखेंगे ये कोर्स में. तो जो मेरा मेजर फोकस था दैट वाज ऑन दी थियरी. ओके. यस यस. तो मतलब जो भी एप्लीकेशन आज मैं बताने वाला हूँ, आई हैव ट्राइड इट विद द बोथ ऑफ द थिंग्स, लाइक वन विद द ओपन एआई का की एंड वन विद द ओपन सोर्स. सो डोंट यू वरी अबाउट इट. सो आई मीन फ्री में भी वो हो जाएगा और मतलब पेड वर्जन से भी हो जाएगा. सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द नोटबुक्स विद यू. डोंट वरी अबाउट इट. आई हैव लाइक कम अप विद फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने. या थैंक्स. सो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो भी मतलब हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना, आई हैव थॉट ऑफ articulating all the codes from the internet, chat gpt. Obviously I won't say that मैंने सारे codes खुद से लिखे हैं, but मतलब point is I tried articulating all the codes from the internet. Few of them I wrote only. ऐसे करके I tried to create a compilation जिसमें we will try to see what all things have happened in the course and how we can implement it. Okay. ये जो कोर्स था, इसका बेसिक पर्पस जो था दैट वाज टू फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रैग, but still like we covered almost each and every aspect of theoretical rag, and I'm very much happy to cover all these things. So today we'll try to cover some of the practical applications, and if you guys really like, then perhaps हम लोग इसको next level पे लेके जाएंगे. Not in this course perhaps, और एक कोर्स कोई तो प्लान करेंगे ऐसे ही फ्री टाइम जिसमें हम लोग ये सब चीजों को और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे और एडवांस एप्लीकेशंस देखेंगे. Since the point is, I have been working in this kind of a domain since last 7 to 8 months approx. I mean, if you talk about the core applications of GenAI, okay, and I have seen this things growing very fastly. तो जैसे कि मैंने अगर पुराना कोड लेके उसको रन भी करना चाहा ना तो उसमें भी एरर आता है. It says that this module is no more, not more anymore compatible, and you have to change this module name, you have to do this install, that installation and so on. मतलब लाइब्रेरीज भी चेंज हो रही है, इतने फास्ट कोड के स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं. सो देयर इज नथिंग स्टैटिक, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली. सो आज अगर मैं जो नोटबुक आपको दूंगा, शायद से वो अगले 4 महीने में आई मीन दैट विल स्टार्ट गिविंग यू एरर एंड यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दैट. सो वही मेरा इंट्यूशन था ये कोर्स के पीछे कि आई विल नॉट फोकस लाइक ऑल द लेक्चर्स ऑन द कोडिंग पार्ट. आई विल बी लुकिंग एट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट. और इसीलिए मैंने 4 में से 3 सेशंस जो थे वो बेसिकली. हाँ प्रणय, श्योर, आई मीन वील जस्ट कम टू दैट, नो इश्यूज. तो बेसिकली इसीलिए मैंने 4 में से 3 जो सेशंस थे, इवन आई डिस्कस्ड इट विद नीतीश सर एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि बेसिकली हम लोग. या आई विल जस्ट आंसर इट एवरीथिंग, डोंट वरी, लेट मी जस्ट कंप्लीट. सो बेसिकली इसीलिए मैंने नीतीश सर से रिक्वेस्ट किया था कि बेसिकली आई विल जस्ट कंडक्ट 3 सेशंस ऑन द थियरी. सम ऑफ यू माइट हैव फाउंड इट वेरी irrelevant. You might be like, अरे भाई जल्दी कोड दिखा, हम लोग को कोड देखना है, and we are not interested in theory. But the point is, most of the times we tend to ignore the theory. मैंने पहले सेशन में भी कहा था, हम लोग जेन एआई की हवा में घुस जाते हैं कि अरे भाई मैं जेन एआई के साथ 2 मतलब एप्लीकेशंस डेवलप कर रहा हूँ एंड देन आई एम द जेन एआई एक्सपर्ट. बट देन वी लीव बिहाइंड ट्रांसफॉर्मर्स, वी लीव बिहाइंड बेसिक जो अपना सिमेंटिक सर्च होता है, सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी होता है, हम लोग को इसका मतलब ही नहीं पता होता. एंड वी जस्ट डायरेक्टली गो ऑन टू फ्लॉन्ट की नो डूड, आई हैव क्रिएटेड अ एआई एप्लीकेशन.
while if you see like मैंने तो exploration में बहुत time spend किया है, तो basically we have like multiple APIs. So GenAI is not something like कि आपको बहुत scratch से चीजों को कोड करना है, right? आपके पास बहुत सारी चीजों के लिए API calls है, so you are going to just download those models, make some API calls, and then get your things done. Okay, real struggle might come अगर आपको मतलब if you don't want to pay and if you want to leverage some sort of a free source or open source models, then थोड़ा फिर आपको struggle करना पड़ेगा. But more or less फिर GenAI में अगर जाओगे तो I mean coding perspective से things are not that challenging. So वही मेरा intuition था कि I will try to cover most of the theoretical aspect. And हम लोगों ने first session में NLP cover किया. Second session में we tried covering the RAG. Third session में we went on to deep dive in the RAGs and we covered the advanced RAG and modular RAG. Okay. So do you guys have any doubts in any of the sessions? Feel free to ask me. Today, I mean, we will be in a state कि हम लोग बहुत quickly उसको wrap करेंगे जो application है वो, and I will just like to answer any of the doubts if you have, and मैं इसी मतलब कोर्स फोरम में आई विल कम अप विद मोर एंड मोर एप्लीकेशंस, आपको मैं वो शेयर करता रहूंगा कोर्स कंटेंट में, सो दैट यू विल गेट like updated with the latest track things in the market. Okay, so I will just try to address all these questions which are asked in the chat. So Pranay is saying, please use NVIDIA Nemo. So currently, Pranay, the lecture which I have prepared, I haven't used. I mean, so basically, I'm not prepared for this NVIDIA Nemo. Perhaps मैं इसको बाद में course content में डाल सकता हूँ. So अभी जो मैंने किया है, that is basically makes use of a open source model and makes use of like OpenAI model. So both the things are available. So currently I have kept it as specific as possible, or as general, not specific, as generalized as possible, since that is widely used. If we talk about, then there are multiple things in the market currently going on, right? NVIDIA Nemo is currently famous, I know. But the point is, again, I don't want to, I mean, I did not want to get into a very specific kind of what do you say, LLM inclination. I wanted to keep these things as general as possible. And OpenAI, आपको अगर पता होगा तो ये बहुत ही जेनेरिक चीज है मार्केट में, मतलब सब लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, और मैंने जस्ट एक फ्रॉम अ से पेड कंस्ट्रेंट पर्सपेक्टिव आई हैव like tried showing it with respect to one sort of open source software, to open source LLM. तो उसकी वजह से I mean you will be able to access the things with a free of cost. Sir, still prototype है GenAI. Okay, I did not understand your question, but if I could interpret from my sense, I would. I mean, मेरे को ऐसा लग रहा है कि you are asking कि I mean still GenAI is in the hype in the market or not. If that is the case, then yes, I would definitely say that currently तो थोड़ा hype है इस section में, but अभी जो मैं मतलब जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, तो मतलब आई वर्क इन फ्रैक्टल, एंड फ्रैक्टल इज लाइक इफ यू जस्ट गो टू लाइक ऑन इंटरनेट, ऑन इफ यू लुक फॉर एनी सर्वे, सो टॉप 5 कंपनीज में इंडिया के एनालिटिक्स वर्ल्ड में इट बेसिकली टेक्स द नेम ऑफ फ्रैक्टल. सो basically we have pretty much talented people here working in fractal. So all the people sometimes complain in some sort of community halls that basically nowadays every client wants us to use GenAI solution. They are like, "Bhai, इसमें GenAI है क्या?" And sometimes it's a very simple bread and butter problem. उसके लिए मतलब कोई rocket science की जरूरत नहीं है. Nothing is required. But then people are like, अरे नहीं नहीं भाई, GenAI तो होना ही चाहिए. अगर GenAI नहीं है तो फिर मतलब solution में मजा नहीं आ रहा है. And ये थोड़ा मतलब it is some sort of concerning, although the costs are high. But the point is every leader wants to showcase or demonstrate their solution as a GenAI powered solution. So they are like कि हमको बस दुनिया को ये बोलना है कि our solution is GenAI powered solution. एंड उसमें होता है ये बहुत टाइम्स कि पीपल टेंड टू फॉरगेट द बेसिक थिंग्स. जो काम बहुत ही सिंपल चीजों से हो सकता है, उसके लिए हर बार यू गो टू ओपन एआई एलएलएम के पास जाओ, उसको प्रॉम्प्ट करो. सी देयर आर मेनी लिमिटेशंस ऑफ एलएलएम. ओके, इट्स नॉट दैट कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. You might feel कि it's a very powerful tool, but when it comes to corporate reliance, okay, what I mean by corporate reliance is you will need accurate results and consistent results. You won't like your model to hallucinate and produce some bad or incorrect quality of results after some times.
Okay, so LLMs ka there is this fundamental issue of say hallucination, and they are still struggling with it. No matter like they have come with more advanced models, and it has definitely improved than what it was during the initial days of ChatGPT or say first GPT versions. But the point is still, corporate is finding a very tough. It is finding it very tough to implement those solutions in actual client interface where these solutions are not consistent over the time. So ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारी मतलब कंपनीज अभी फिलहाल फेस कर रही है. So for that reason, I mean, it is still in hype, but the problem यही है कि I mean, everyone wants to use it everywhere, which should not be the case. But I hope things will improve and people will get some sort of a little more data awareness or say GenAI awareness. कहाँ पे use करना चाहिए नहीं करना चाहिए. There is one more consideration which is racial or ethical considerations जो GenAI अभी तक उतना मतलब नहीं कर पाया. So there are many things which are going on in the say AI space which are not being perceived as a ethical or what you say they are not being उनके ऊपर ऐसे लॉज नहीं है कोई स्ट्रिक्ट कि मतलब इसको बेसिकली यू विल मॉनिटर इट फ्रॉम अ रिस्पेक्ट ऑफ इथिकल कंसिडरेशंस. मतलब कंट्रीज में थोड़े बहुत लॉज हो सकते हैं बट देयर आर मेथड्स विथ व्हिच यू कैन बाईपास दिस. ओके, so I mean there are ethical considerations, there are some racial issues with this generative AI outputs and so on. So those things basically are to be taken care of, and then perhaps Gen AI I think is good. But I would request all of you कि मतलब ये सीखते समय you don't ignore all the basic stuff of NLP or basic stuff of machine learning, because if you are learning basic NLP, basic machine learning, if you are focusing much on linear algebra, calculus, then perhaps it is going to take you long way ahead. क्योंकि ये applications develop करना is not a rocket science, again I'm telling you. But if you understand like even basic things like what is a convex function, what are concave functions, how optimizers work in say even in a linear regression. So these things are basically crux of the data science. And I would request you to some sort of dedicate your time in order to learn these things. So next question is, okay, sir, is this GenAI text used in production? Yes, I mean they use this in production, but again there are issues with the uncertainty. I mean hallucination एक बहुत बड़ा problem. तो कोई भी कंपनी चाहती है जो भी सॉल्यूशन हम लोग डिप्लॉय करें दैट शुड स्टे कांस्टेंट ओवर द टाइम. आई मीन एटलीस्ट फॉर सम टाइम. मशीन लर्निंग सॉल्यूशन भी एक पॉइंट के बाद वायलेट हो ही जाता है, उसका प्रेडिक्शंस का सही नहीं आता. बट इसमें जितना हेल्यूसिनेशन इश्यूज है ना उतने मतलब नॉर्मल अपने जो क्लासिकल मशीन लर्निंग टेक्निक्स है उसमें नहीं है. सो या it basically it gets used in the production. What is difference between AI agents and all? Okay, yeah. So AI agents and RAG. So agents are basically, they are some sort of entities. आप इसको एक एक्चुअल एजेंट की तरह समझो कि बेसिकली एक्चुअल एजेंट कैसा होता है. इट इज मतलब आप अगर कोई भी चीज करने जाते हो, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, यू ट्राई टू डील विद द एजेंट, राइट. सो एजेंट इज समवन who is a mediator, who will try to connect the two sides and he will take care of everything. So AI agents जो होते हैं ना they also do the same thing. Okay, while RAG जो होता है RAG is little different. I mean AI agent ऐसे होता है कि it's basically kind of a entity which can be used for multiple reasons, while RAG is basically a specific technique जिसमें हम लोग external knowledge database या internet access देते हैं अपने LLM को in order to get updated with the latest corpus. And sir, how models hallucinates? Hallucinates means overfitting. So hallucinates. So hallucination is basically a phenomenon जहाँ पे आपका model जो है, it tries to produce some inconsistent results, and these results may not be correct. I mean, it may not be factually correct, not factual terms, but it may not be correct. बट वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स देना शुरू करता है. सो बेसिकली अगर मतलब मैं एक ही क्वेश्चन मेरे एलएलएम को बार बार पूछ रहा हूँ, ओके, विद सम डिफरेंट स्टाइल, और मैं अगर सेम क्वेश्चन भी उसको पूछ रहा हूँ ना, तो नाउ अपना एक नॉर्मल इंट्यूशन क्या होता है, इफ आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन आई शुड गेट द सेम आंसर provided the fact that answer is correct. Okay, if the answer is wrong then you can definitely give the feedback and it will improve.
But the point is, if the answer is correct, then it should stay constant, right? But hallucinations mein hota kya, if you just keep on asking the same questions in a similar style or in a same manner, then it tries to give you different answers. Okay, which is not reliable. Okay, using a better correct prompt, it can. Okay, yeah. So basically, these are the solutions. There are multiple solutions with which you can control the hallucination. But it's a serious issue. I mean, even though you will be able to control it at this up to a certain extent, but वो पूरा eliminate नहीं होगा. I mean, that is the basic, you know, क्या बोल सकते हैं उसको, cons बोल सकते हैं, which currently this Gen AI industry is facing. हाँ, तो मैं AI agents और RAG पे बात कर रहा था. So yes, AI agent is basically someone who basically will try to negotiate between your LLM and all sort of special kind of tasks you want to perform. While RAG is basically एक exclusive method है जिससे आप online database या फिर जो भी आपका internet access है उसको दे सकते हो. Is there market for discriminative AI? Yes, I mean, see, ये जो applications है ना, so if you talk about discriminative AI, if you talk about any sort of, I mean, variants in the AI ना, there is market, but अभी market को खुद को मतलब इतना अच्छे से market ने segregate नहीं किया है roles को. So if you just look at it, तो कुछ साल पहले there were people who used to like work as a data scientist. जो डेटा एनालिस्ट भी होते थे उनको भी डेटा साइंटिस्ट बोला जाता था, जो डेटा इंजीनियर है उनको भी डेटा साइंटिस्ट बोला जाता था, और मतलब एक जनरल टर्मिनोलॉजी था डेटा साइंटिस्ट का. But later, over the period, people understood कि consultant is someone different, data architect is someone different, data scientist is someone different, data engineer is someone different. Now market started with this actual segregation जिसमें data engineer pipeline से बनाएगा, scientist will work more on machine learning and production, ML ops engineer वो अलग एक role है. तो I mean now market understood कि इसके हर मतलब branches को split करके उनके roles को target कैसे करना. So if you talk about AI, na, I would say that AI is pretty old in the world. Okay, it's not like कि आज ChatGPT और AI बाहर है. But इंडस्ट्री में जो मास लेवल का मतलब यूसेज जो हुआ है ना, जितना पॉपुलर आज हर कंपनी में कोई भी एनालिटिक्स टीम में यू विल टेंड टू यूज जेन एआई. अगर डायरेक्टली यूज कर भी नहीं हो रहे तो एटलीस्ट यू विल मेक यूज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एआई टूल्स इन ऑर्डर टू राइट सम content, in order to get your queries answered and so on. So basically now AI is getting in our day-to-day lives, in our corporate lives. So basically we have market for every sort of variant of AI, but that is not clearly identified yet. तो आपको एज ए इंजीनियर ले लेंगे वो लोग, और फिर मतलब देन यू हैव टू फिगर आउट विद देम, आई मीन ऑन व्हाट एवर प्रोजेक्ट्स दे आर वर्किंग ऑन. तो बेसिकली यू विल हैव दिस सेशंस टू फिगर आउट कि मतलब बेसिकली क्या काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कौन से नुआंसेस आपको ढूंढने हैं, एंड सो ऑन. सो दिस थिंग्स एक्चुअली आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड, बट सून दे विल बी. Sir, how did you? Okay, so this is a generic question. Don't worry. I mean, I'm keeping the time frame in my mind. Okay, don't feel कि यार मैं digress करके कुछ भी पकाए जा रहा हूँ. I understand कि मेरे को क्या content cover करना है. Don't worry, cover कर दूंगा. अगर कुछ by default बच भी जाता है तो भी आपके पास notebooks है. You should not to be worried क्योंकि मतलब code explanation, I don't think that's a very big thing. But I mean, so I'm just dedicating this time for some of the Q&A. If you have any Q&A, you feel free to ask me, since today is the last lecture, and I have kept that mind time frame. So how did you get into DS, ML, DL, and AI? Okay, so basically, I am a statistician. So I have completed a master's in statistics from Pune University, and I got like placed through campus. And since I am basically a statistician, तो मेरे को मतलब data science में बहुत ज़्यादा interest था. Since if you talk about data science, it's kind of a child of computer science and statistics. Statistics पूरा theory cover करता है and computer science पूरा execution part cover करता है. So that's how data science comes into picture. So being a statistician, I kind of dedicated almost my entire educational life. 5 साल मैंने तो statistics के पीछे ही लगा दिया. Data science में I had interest, and it was really interesting. So मेरे को campus placement से ही I mean I got a job. And then, though, I mean, I did not face any difficulty. I stayed in the industry. रोड में बता सकते हो क्या to get बस AI intern. Okay, so this is a very good question.
The reason is, I mean, many people feel overwhelmed by looking at the internet resources. So, मतलब मैं खुद भी बहुत बार मतलब ना मेरा सर चकरा जाता है कि यार इंटरनेट पे इतनी चीजें है। मतलब कृष्णा एक हर 2 दिन में 2 वीडियो बना रहा है, और कोई आप देखोगे तो और 2 दिन में वीडियो बना रहे हैं, अपने सर भी खुद वीडियो बना रहे हैं। सो आई मीन कंटेंट इज रियली गुड, बट द पॉइंट इज इट इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग कि यार अब देखूं क्या, ये देखूं वो देखूं, यार मतलब और क्या क्या चीजें मैं कवर करने जाऊँ। इंटरनेट पे देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। जेन एआई तो इतना पॉपुलरली चेंज हो रहा है कि कल तक जीपीटी 4 था, फिर जीपीटी दूसरा कोई तो आएगा, अभी जीपीटी 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। एंड ये डेवलपमेंट स्लो भी नहीं है, लाइक हार्डली एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में इतनी स्पीड मतलब रैपिडली चीजें चेंज हो रही है। तो अभी लैंग्राफ बहुत लाइक इट्स नॉट इन टॉक्स, राइट? सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली, एंड इन दिस केस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को एज अ रोड मैप क्या चीजें फॉलो करनी है एक्चुअली। So basically, if I talk about, having a roadmap for AI intern, so I would suggest you can start with basics of, so basically AI को approach करने के मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं. One is through the NLP, other is through the computer vision. Okay, so you firstly decide which stream you are supposed to target. Abhi some people might say that okay, I like computer vision more, so you can just get through that field. Some people say that I like NLP more, so you can just get through this side. So AI is all about working largely on unstructured data, because on structured data you have multiple machine learning, deep learning techniques already in the place, right? So if you are very much sure that you are liking about computer vision, then you can just start working around all sort of basic concepts of computer vision. You can just work around basic image processing. Image होता क्या है, CNN क्या होता है, because CNN is the very base architecture. Then you can just work on BGG, mobile net, बहुत सारी YOLO हो गया, बहुत सारी चीजें जो बेस से आप स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन वर्क ऑन कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स, एंड देन you can slowly start getting into the diffusion models, stable diffusion models वगैरह आप देख सकते हो, because this is a fundamental like behind computer vision. And अगर आप वो सब पढ़ने जाओगे तो there are more interesting theories which revolve around Markov process. And I would suggest कि आप जब ये करते हो ना, so don't फॉलो दैट पाथ कि मैंने यूट्यूब का वीडियो देख लिया कहीं से, तो उसका वो यूट्यूबर का कोड ले लिया कमेंट सेक्शन में से, एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करके रन कर दिया, एंड देन आई एम एन एआई एक्सपर्ट. इट डज नॉट हैपेंस लाइक दैट. ओके, सो आपको सबसे पहले जब भी आप काम करोगे इस पे, तो यू हैव टू लुक एट द थियरी कि स्टेबल डिफिजन मॉडल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. इट्स नॉट लाइक कि मतलब एक यूट्यूबर ने दिखा दिया, मैंने कोड कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, खुद से 2 4 चीजें कर दिया और मतलब हो गया. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सो अगर कोई आपको स्टेबल डिफिजन मॉडल्स के बारे में पूछता है, तो यू शुड बी एबल टू टेल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मार्को प्रोसेसेस एज वेल. तो मतलब स्टोकेस्टिक का नॉलेज आपको होना चाहिए. और मतलब अगेन लोग बहुत बार पूछते हैं कि यार ये सब का क्या फायदा, अगर मैं डायरेक्टली एपीआई कॉल करने वाला हूं, तो ये सब क्यों मगजमारी में पड़ना ना, व्हाई शुड आई स्पेंड माय टाइम ऑन दैट. द पॉइंट इज, even if you are not directly using these things, but still it will help you to understand how algorithm behaves. तो मेरे खुद के केस में, आई मीन आई हैव इवन सेड दिस इन द फर्स्ट सेशन, कि बहुत बार ऐसे होता है कि you will try to work with some specific algorithm which is not working well in the case of particular data. एंड उस केस में ना, इफ यू डोंट नो कि अल्गोरिथम एक्चुअली अंदर से काम कैसे करता है, हम लोग ना अपना बहुत सारा टाइम ना फालतू चीजों पे वेस्ट करते हैं. जैसे लीनियर रिग्रेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे डेटा में लीनियर रिलेशन है ही नहीं, मल्टीकोलिनिटी बहुत ज्यादा है, और मतलब एरर वेरिएशंस कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे जो अजम्पशंस थे एरर के. तो मैं मतलब लीनियर रिग्रेशन बना रहा हूँ, मेरे को आउटपुट बहुत गंदा मिल रहा है. नाउ आई एम थिंकिंग कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं फीचर इंजीनियरिंग पे और 10 घंटा स्पेंड कर रहा हूँ, मैं और कुछ तो फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूँ. बट भाई तेरा मतलब बेसिक एजम्पशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो तुम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करके करोगे क्या? तो फोकस की तुम उन डेटा को एजम्पशंस में कैसे फिट कर पाओगे. नॉर्मेलिटी अगर पूछ कहीं पे एजम्पशन है, तो नॉर्मेलिटी कहाँ कैसे लेके आओगे, कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन, से मैंने कोई तो लाइक क्या बोलते हैं, इसको ओमिट कर दिया, इसको इम्प्यूट कर दिया. ऐसी तरीके से रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू. But if you don't know the basics behind algorithm, then you are going to spend a lot of time on this, which is going to yield you to nothing. So इसके लिए आपको algorithm की theory पता होनी चाहिए. And the next thing is the most important thing which I have learned from say understanding the algorithms from scratch is, you may feel कि यार मैं linear regression को directly use नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसके जो बीटा एस्टिमेटर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो गया, कोई भी मतलब एस्टिमेशन टेक्निक, आई एम नॉट डायरेक्टली हैंड कोडिंग द बीटा 1 बीटा 2 का वैल्यूज, राइट? बट व्हाई शुड आई लर्न दिस algorithms from scratch? Because they will help you in order to develop an analytical mind. कि आपको एक पता चलेगा कि ओके अगर मेरा प्रॉब्लम इस तरीके से चेंज हो रहा है, हाउ कैन आई लीवरेज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट अ पर्टिकुलर पैरामीटर.
सो आई मीन आई हैव गिवन द सेम एग्जांपल इन फर्स्ट लेक्चर एज वेल कि एक बार हम लोग को ऐसा हो रहा था कि XGBoost में वी हैड टू यूज अ डिफरेंट कस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो कस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नॉलेज कहाँ से आया? अगर हम लोग कभी मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कैसे मिनिमाइज करना है वो सब पढ़ते ही नहीं, तो ये सब कैसे पता चलता ना? वी वुड हैव लाइक लॉस्ट इन द सी एंड हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं। हम लोग बस देखते रहते हैं रिजल्ट्स पुअर आ रहे हैं, रिजल्ट्स पुअर आ रहे हैं, बट देन वी अंडरस्टूड कि नो, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वी हैव टू not use the custom object default objective function, we have to define our custom objective function as per the use case. So ये एक बहुत एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इफ यू आर वेरी मच श्योर तो कंप्यूटर विजन में यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ आपके जो भी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह वो सब आपने सीखना है, योलो सीखना है, स्टेबल डिफ्यूजन सीखना है। देन यू कैन जस्ट गेट इनटू द एडवांस एआई एप्लीकेशन। अभी तो विजन प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी आ चुके हैं, तो यू कैन जस्ट वर्क ऑन दैट। इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर एआई फील्ड वाया एनएलपी, तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर सपोज टू वर्क ऑन बेसिक्स ऑफ एनएलपी। जैसे टेक्स्ट होता गया, लिंग्विस्टिक स्किल्स को यू हैव टू मास्टर्स। नॉट आई एम फ्रॉम दैट आई एम नॉट मीनिंग कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आना चाहिए, नॉट दैट, बट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द नुआंसेस लाइक पॉज टैगिंग क्या होता है, फिर स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो एनएलटीके में कैसे चीजें वर्क की जाती है, और सारे मॉड्यूल्स यू शुड बी लिटिल बिट फेमिलियर अबाउट। देन टेक्स्ट प्रोसेसिंग आपको बहुत यू शुड बी वेरी मच थरो विद टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कि अगर मुझे मतलब किसी ने बोला है कि मतलब पैराग्राफ दिया है, उसमें से आई एम सपोज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड, हाउ कैन आई डू दैट? अगर मेरे को किसी ने बोला है कि मेरे को डिस्टेंस निकालना है वर्ड्स के बीच का, तो कैसे निकालूंगा? इफ समवन इज आस्किंग मी लाइक गिव मी ऑल द वर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद एल, हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड इट? सो ऑल दिस वर्ड्स इट्स लाइक ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए। लाइक आपने जस्ट एक सीधा जुपिटर ओपन किया और कोड करना शुरू किया, ये लेवल का आपके पास वो मास्टरी होना चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और प्रोसेसिंग के रिलेटेड। देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस, एक एक लेवल से आपको स्टार्ट करना है। यू हैव टू वर्क विद द बेसिक न्यूरल नेटवर्क। देन उसके ऊपर आरएनएन आता है, आरएनएन के ऊपर एलएसटीएम आता है, एलएसटीएम के ऊपर आपका ट्रांसफॉर्मर आता है। मैं ट्रांसफॉर्मर में आप इनकोडर डिकोडर पढ़ोगे, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स पढ़ोगे, एंड यू हैव टू लाइक लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ सीक्वेंस सिंस दे आर बीइंग डेवलप्ड इन अ सीक्वेंस ओनली। कि इसका एक लिमिटेशन था, इसके लिए अगला वाला मॉडल डेवलप किया, इसका एक लिमिटेशन था, इसके लिए उसके अगला वाला मॉडल डेवलप किया। इफ यू ब्रेक द क्रोनोलॉजी इन सम इन बिटवीन, देन यू विल फाइंड द इश्यूज, कि आप मतलब समझ नहीं पाओगे कि यार ट्रांसफॉर्मर में ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, एलएसटीएम में क्या खराबी थी। तो ये आपको सीक्वेंशियली प्रोसीड करते जाना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर फैशन। उसके बाद आपको बेसिकली यू हैव टू जंप इनटू द एलएलएम्स। एलएलएम पे सीधा जंप मत करो। मैं जितना मतलब आपको बता सकता हूँ, मैंने पूरा एनएलपी लाइक आई ब्रश्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच। हगिंग फेस आई डिड ऑल द ट्यूटोरियल्स, देन आई बेसिकली केम टू एक्चुअल एलएलएम्स। उसमें भी मैंने बर्ट बहुत मतलब अच्छे से किया। देन आई लाइक सॉल्व मल्टीपल यूज केसेस पर्टेनिंग टू सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग यूजिंग बर्ट टॉपिक हो गया, एलडीए हो गया, ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद यू जंप टू एलएलएम्स। डायरेक्टली एलएलएम को जंप मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना और सीधा आपको इजी चीजें मिल जाएंगी हाथ में, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल, बिकॉज ओपन एआई का है ना आपकी मतलब आधे से ज्यादा चीजें वो सॉल्व करके देता है बहुत ही आसानी से। ओके, सो यू विल नॉट गेट इनटू ट्रेडिशनल व्हाट यू से एनएलपी। तो पहले वो कवर करके आओ, देन यू गेट इनटू एलएलएम्स, जिसमें आप थोड़ा मतलब लैंगचेन कवर करो, लामा इंडेक्स कवर करो। यू लाइक स्टार्ट रीडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स एलएलएम्स, हाउ ओपन सोर्स एलएलएम्स आर ट्रेन्ड। आप जीपीटी आर्किटेक्चर के बारे में और डेप्थ में समझो। मतलब कोई अगर आपको पूछता है हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, यू शुड बी एबल टू टेल देम, इतना आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, सो इन दैट वे यू शुड प्रिपेयर योर एआई रोड मैप। और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ मतलब थियरी पढ़ने से लाइक नहीं होगा कुछ, आपको एप्लीकेशंस तो साइड बाय साइड बनाने ही होंगे। एंड यू कैन जस्ट क्रिएट अ वेरी नाइस गिटहब रेपो, प्रोफाइल बना सकते हो आप। देयर आर मल्टीपल टूल्स लाइक फोलियो एक हो गया, जिसमें आप अच्छे से प्रोफाइल बना सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स वेयर यू कैन क्रिएट योर अट्रैक्टिव प्रोफाइल। तो ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज यू कैन फ्रॉम से, फॉर एग्जांपल आप अगर एनएलपी कर रहे हो तो एनएलपी में यू शुड वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट विच इज इन्वॉल्विंग टॉपिक मॉडलिंग, one project which involves sentiment classification. Now sentiment classification में both the things are there, one is supervised, one is unsupervised. Hugging face का सीधा आप मॉडल यूज कर रहे हो तो अनसुपरवाइज में चला जाता है। अगर आपके पास वो ट्रेडिशनल वाला सिस्टम है जिसमें आपके पहले रिव्यूज मार्क करके रखे पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल वगैरह, तो दैट इज बेसिकली सुपरवाइज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यू शुड लाइक कवर बोथ द थिंग्स, टॉपिक मॉडलिंग कवर करो, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन कवर करो, एंड इसमें ईडीए पे ज्यादा फोकस करोगे। एनएलपी में ईडीए एक बहुत हाईलाइटेड फील्ड है जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। पीपल थिंक यार एमएल में
ईडीएफ फोकस होता है, बट एनएलपी में कुछ होता ही नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. नीतीश सर के आप अगर वीडियोस देखोगे तो ही हैज फोकस्ड अ लॉट ऑन डूइंग ईडीए इन एनी ऑफ द एनएलपी प्रॉब्लम्स. सो यू कैन जस्ट थिंक लाइक टेक सम hint from there, or you can work on EDA, क्योंकि EDA plays a pivotal role in analyzing any of the textual data. Okay, तो वो सब चीजें हो गई, and I think that should be the ideal roadmap you should be following. Then हाँ तो so I tried using SimpleRAG for resume parser. I had 5 resumes, but when I asked the names of the candidates, it gave only first 2. But later, when I अरे बाप रे एक minute, okay. So when I asked names of the candidate, it gave me only first 2. But later, when I specifically asked questions based on 3, 4, 5 resumes, it was accurately giving me the results. Why do you think it was not able to give me the name of all the candidates? Okay, so ये आंसर ऐसे देना तो would be very difficult since I haven't seen the actual code. Perhaps I need to, you can just post that question on the forum. Just try to paste the snapshot of the code, क्योंकि ऐसे देख के बताना तो difficult है. But आई डोंट नो, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इफ यू आर सेइंग कि वो 3 4 5 के बेसिस पे आंसर करेक्ट दे रहा था, तो नेम ऑफ कैंडिडेट्स में 2 ही क्यों देगा? आई मीन आई डोंट फाइंड एनी सुटेबल रीजन बिहाइंड दैट. देयर माइट बी रीजन कि वो मतलब इतना एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन, विच इज सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द यूजुअल रैक. बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी द कोड बिफोर कमेंटिंग. ओके, then I'm currently trying to solve a problem where I have a user query from where I'm extracting some keywords separately, and I have a files DB with 400 documents with business case study about a certain product. I have to fetch top 5 most similar document which I can consider to make a new document. The key idea is based on the query, the business case study should learn from existing examples. Okay, do you suggest classifying each document of DB with keywords so it can be fetched efficiently, or should a simple cosine? Okay, so उस केस में ना basically if you are say facing this issue, there are multiple approaches. Okay, you can just make use of advanced rank, जैसे हम लोगों ने बोला था. आपके पास अगर 400 डॉक्यूमेंट्स है, you can just fetch top 20 or top 25 documents with the help of simple retriever, एंड उसके बाद आप उसके ऊपर कोहर री रैंकर लगा दो, या फिर कोई भी आपका बर्ट री रैंकर है, जो भी आपके पास री रैंकर है, यू कैन जस्ट अप्लाई दोज री रैंकर्स इन ऑर्डर टू गेट टॉप 5. Okay, so basically, the idea behind using double layer of re-ranking is, ranking is आपको और ज्यादा precise answers मिलेंगे आपके solutions के, okay, questions के. But the point is, अगर आपको इस case में you don't want to involve any sort of cost, मतलब आपके पास you don't have that liberty to use OpenAI, I mean you don't have access to that, then perhaps you can just work with some sort of open source model. And if your company is very much strict कि हमको LLMs के बारे में जाना ही नहीं है, कुछ और तरीका देखना है, तो in that case you can just definitely think of filtering the data. मतलब आप उस डेटा को like you try to classify it with some sort of categories, and then you try to within each group you try to do some analysis that would help you. तो मतलब ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. तो उसके लिए ना देयर आर मल्टीपल थिंग्स. सो अभी अगर जैसे मैंने 400 मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आई क्लासिफाइड देम इनटू 20 डिफरेंट क्लासेस. तो दिस कैन बी परसीव्ड एज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल टेक्निक, आई एम नॉट टचिंग एलएलएम येट. ओके, तो मैंने 400 डॉक्यूमेंट्स को आई हैव क्लासिफाइड इनटू से 20 डिफरेंट क्लासेस, एंड नाउ इट बिकम्स अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम फॉर. अभी मेरे पास जो नया डॉक्यूमेंट आएगा ना, तो सबसे पहले व्हाट आई विल डूइंग इज आई विल बी मेकिंग अ प्रेडिक्शंस ऑन इट. तो उसके हिसाब से मेरे को कोई तो क्लास मिल जाएगा. नाउ आई विल जस्ट टेक माय एंटायर सर्च ऑपरेशन टू दैट एंटायर क्लास, जो भी मेरा क्लास लेवल 1 है, तो मैं क्लास लेवल 1 के सारे ऑब्जर्वेशंस को स्कैन करूंगा, और फिर स्कैन करके देन आई विल ट्राई टू फाइंड टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ. सो दैट इज वन ऑफ द वे. क्योंकि अगर आप कोसाइन सिमिलैरिटी लगाओगे 400 डॉक्यूमेंट्स पे, इट माइट नॉट बी द आइडियल केस. अगर आपके पास फ्यूचर में ये कॉर्पस बड़ा होते जाएगा, तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग इफ यू आर लाइक से अप्लाइंग कोसाइन सिमिलैरिटी ऑन ऑल दी डॉक्यूमेंट्स. तो पहले आपके मतलब चीजों को शॉर्ट करो, फिल्टर आउट करो. तो फिल्टर आउट करने के लिए यू कैन वेरी वेल मेक यूज ऑफ सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स in order to classify these documents first, and then you can apply all sort of advanced techniques. अगर आप मतलब LLMs को भी यूज करना चाहोगे, तो try to focus on some sort of open source LLMs. But if you are talking about say OpenAI or things like that, and if you have some cost constraint, then it will be really difficult for you to analyze such large corpus of document, which is going to increase after a particular point, and so it will take a lot of cost. I mean, it will consume a lot of cost. So in order to highlight top 5, you can just work with LLM approach if you have that liberty, or else you can just work with the
machine learning approach in order to classify into the one particular class, and then you just apply a cosine similarity. Okay. If you have all the conceptual understanding how MLDL and NLP works, can you take Chat GPT? Definitely. तो चैट जीपीटी क्या है? वो बेसिकली लिंग्विस्टिक पावर आपके पास जितनी अच्छी होगी उतना आपको वो हेल्प करता है। मतलब अगर आप आपकी क्वेरी अच्छे से लिख पाते हो तो इट विल हेल्प यू। मतलब अभी तो ऐसे हो गया, पिछले 2-3 महीने में हम लोग में से बहुत कम लोग कोड करते हैं एक्चुअली। हर कोई मतलब चैट जीपीटी से चीजें लिखवा रहा है, विच इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। आई मीन आई माई सेल्फ हैव बीन सफरिंग अ लॉट इन इंटरव्यूज। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि बेसिक लिस्ट के मैनिपुलेशन के क्वेश्चन भी आप दिमाग खुजाते रहोगे कि यार इसको कैसे करना है, क्यों करने को आता ही नहीं, भी हम लोग इतने दिनों से चैट जीपीटी से ही करवा रहे हैं। But I mean, it will definitely help you in order to give you a proper commented code, proper functional code, जो एक अच्छी practice होती है। I mean, if you are focusing more on say good software engineering practices while writing a data science code, it is definitely recommended। अगर आप कोई भी चैट जीपीटी का मतलब सोल्यूशन देखोगे, इट इज वेरी प्रिसाइज इन नेचर। आपको लाइब्रेरी सिस्टमेटिकली लोड करके देता है। इट विल गिव यू आंसर इन proper functional format. So coding is basically very much easy with the chat gpt. If you are talking about conceptual understanding, if you are just trying to ask questions to chat gpt, then it is little bit gray area। तो मेरे को मतलब जब मैंने पहले एक्सप्लोर किया था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे डूड अभी तो मेरे को टीचर की जरूरत ही नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं कुछ नहीं, मैं बस इसको ही क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई विल गेट आंसर्स। बट द पॉइंट इज देन इट्स अ ग्रे एरिया। यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन चैट जीपीटी सॉल्यूशन। इट माइट बी like as wrong as like you can even imagine। so जैसे आपने वो 2+2 वाला एग्जांपल तो देखा होगा लिंक्डइन पे, बहुत बार लोग उसका मतलब मजाक कैसे उड़ाते चैट जीपीटी का। बट अभी भी मतलब उन्होंने दे हैव सेड कि अभी रिसेंट अपडेट्स में दे हैव करेक्टेड दिस थिंग्स। बट स्टिल आई मीन आई वुड से दैट you will still cannot, I mean you will not be in a position to rely on chat gpt's output entirely। वो कभी भी गलत आउटपुट दे सकता है आपको। तो मतलब बहुत अच्छे से मस्का मार के आंसर देता है वो, आपको लगता है अरे इसने लिखा है तो सही लिखा होगा, but it's not the case। So you have to verify it, with some other sources। So अगर आप concept chat GPT से understand करना चाहते हो, तो it should be like कि वो एक मतलब आप उसको एक glance में देख रहे हो, but you are not over relying on that कि chat GPT ने बोला ये सही है मतलब सही है, ऐसा नहीं है। You can just take a basic idea from it, you can just re-verify it from other sources, and then you can develop your understanding around it। So that's the approach GStreamer is used in computer vision। Sorry, brother, I don't have much idea about this। Perhaps, I can just read about it and then can tell you। Which is the best GPU for? अरे हाँ यार, वो लास्ट टाइम रह गया था, मैं भूल गया उसको। ठीक है प्रज्वल, आई एम सो सॉरी। आई नो दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द लास्ट सेशन एज वेल। मैं इसको सच में भूल गया। uh, मैं इसको आई विल जस्ट ट्राई टू कवर इट, डोंट वरी। मैं इसको आई हैव जस्ट नोटेड इन काइंड ऑफ माय डॉक्यूमेंट। मैं इसको आई विल जस्ट आंसर यू दिस क्वेश्चन। How embedding is different from encoding? Embedding is no, encoding is different. No. So if you're talking about encoders, these are different. Embeddings are different. Uh, are you confused because these? I mean, they are somewhat similar in names, or is it something different? Encoders are different. Embeddings are different. Okay, I mean हम लोग 5 और मिनट देते हैं और इसके बाद we will just try to cover the coding part. Okay. I know you touched on it earlier a little bit, but what's your thoughts on how much in-depth ML and DL knowledge of conceptual and practical projects do you think is required for new Gen AI student? देखो यार, अगर तुम्हें ना मतलब ऐसे बहुत जल्दी जॉब चाहिए एंड यू फील कि मतलब मेरे को बहुत सारे एप्लीकेशंस बना के क्या बोलते हैं रिक्रूटर को इम्प्रेस करना है, देन शुरू हो जाओ। फिर मतलब इंटरनेट भरा पड़ा है, गिटहब है आपके पास, यूट्यूब है। जाओ कोई भी यूट्यूबर देखो, उसका प्रोजेक्ट लो, थोड़ा बहुत अपनी चीजें ऐड करो, एंड देन जस्ट प्रेजेंट इट। यू विल बी एबल टू क्रिएट एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट इंटरव्यू में ना आपको कोई भी जेन एआई पे ऐसे सवाल नहीं पूछता अभी। लाइक द पॉइंट इज, आई हैव फ्यू पीपल whom I have been working with। They usually take interviews of people basically who are aspiring to become AI engineers, और जो भी जेन एआई स्पेशलिस्ट हमारी कंपनी में रिक्रूट होते हैं, उनके जो इंटरव्यूज लेते हैं वो मेरे मतलब अच्छे कलीग्स दोस्त है बेसिकली। तो आई इवन टेल देम कि आप क्या पूछते हो चीजें, तो मोस्टली दे आर लाइक कि जेने कोई ऐसा नहीं कि हम लोग उनको मतलब सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के बारे में पूछेंगे या सिर्फ मतलब फाइन ट्यूनिंग के बारे में पूछेंगे। वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम लोग उनको पूछते हैं एनएलपी के बारे में, हम लोग उनको पूछते हैं ट्रांसफॉर्मर आता है क्या नहीं,
बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भाई लैंगचेन के बारे में पीएचडी करके बैठे हैं, बट ट्रांसफॉर्मर क्या है उनको पता ही नहीं है, ऑटो एनकोडर्स क्या है उनको पता ही नहीं है, एनकोडर्स क्या है उनको पता ही नहीं है। आई मीन, तो मतलब ये ऐसा होता है ना, हिपोक्रेसी हो जाती है कि आप मतलब बहुत एडवांस लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, बट आपका मतलब बेस तो पूरा खाली है। तो मतलब जेन ए स्टूडेंट अगर आप हो, तो मैं बोलता हूँ अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एंड इफ यू आर लाइक कि नहीं बॉस मेरे को अगले एक महीने में ही जॉब ढूंढना है, तो उस केस में इफ यू डोंट हैव द टाइम टू प्रिपेयर फॉर से थियोरेटिकल concepts, then only you go behind the projects and you take that bet, क्योंकि थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करने जाओगे तो एक महीना उसमें ही निकल जाएगा, प्रोजेक्ट्स कब करोगे, राइट? बट इफ यू कैन अफोर्ड सम टाइम कि बॉस अगर एक महीना भी कर रहे हो और फुल टाइम दे रहे हो उसके लिए, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग। आप पूरा प्लान करो, 2 हफ्ते में 2 प्रोजेक्ट करो, एंड उसके अलावा यू नो डेडिकेट एटलीस्ट 2 आवर्स इन अ डे फॉर कवरिंग द थियोरेटिकल concepts, तो उसमें आपका एक महीने में हो जाएगी, आई वुड से। बट अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, देन यू जस्ट जंप टू द एक्चुअल प्रैक्टिकल केसेस। my case study which I asked earlier is topic modeling effective way। टॉपिक मॉडलिंग क्या क्या होता है ना भाई, कैसे होता है टॉपिक मॉडलिंग? जो 400 बिजनेस केस स्टडी वाला प्रॉब्लम था जिसमें आपके पास 400 डॉक्यूमेंट्स थे, टॉपिक मॉडलिंग माइट बी एन इफेक्टिव वे, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, टॉपिक मॉडलिंग विल नॉट गारंटी यू लाइक द आउटपुट्स विच यू वांट टू सी। ओके, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, so if you are performing topic modeling, you don't have that control कि बॉस मेरे को क्वालिटी रिलेटेड, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट का रिव्यू, प्रोडक्ट के रिव्यूज में कौन सी चीजें बार बार बताई जाती है? क्वालिटी हो गया, कॉस्ट हो गया, कलर हो गया, प्राइस हो गया, और टेस्ट हो गया, देन उसका अवेलेबिलिटी हो गया। दीज आर दी मोस्टली टॉप थिंग्स, राइट? बट ऐसा होता है कि इट इज नॉट अ गारंटी कि हर टॉपिक आपको, मतलब जो भी आपको टॉपिक्स मिले, दीज विल बी रिलेटेड टू दिस ओनली। सो उस केस में ना इट अगेन बिकम्स अ ग्रे एरिया टू इन्फर फ्रॉम। आपको ऐसे कोई टॉपिक्स मिल रहे हैं जो उतने सेंसिबल नहीं है, तो उस केस में आप मतलब आगे कैसे बढ़ोगे? तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू segregate the documents. So for that reason, what I like suggested you to is you can just work with the classical machine learning approach। आपके पास जो कॉर्पस है, you can just label it with some sort of classes। It totally depends on your business कि आपको कितने classes में you have to what is it classify it, and then you can work around classification algorithm। So topic modeling can be a little gray area, it might not produce outputs which you want to see। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये क्लियर कोई टॉपिक दे देगा आपको जिससे आपको पता चलेगी और ये नहीं, ये क्लियरली बेसिकली इसका इंडिकेटर है। सिंस ये रियल डेटा है, कोई अगर टॉय डेटा सेट होता तो उसमें आपको आराम से मिल जाते टॉपिक्स, बट रियल डेटा सेट में बहुत नॉइस होता है। ये आप खुद भी कभी प्रोडक्ट के रिव्यू लिखते हो ना, तो देर आर वेरी फ्यू पीपल आई हैव सीन कि मतलब जो एक्चुअली बहुत पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू लिखते हैं किसी मोबाइल का, किसी प्रोडक्ट का, कि इसका कॉस्ट खराब है, इसका क्वालिटी है। बहुत सारे प्रोडक्ट लोग तो मतलब कुछ भी लिखते हैं कि अरे डू नॉट बाय, बैटरी फेडिंग, ये हुआ वो हुआ, एंड देन दे डाइग्रेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो वो रियल डेटा में नॉइज बहुत रहता है। सो फॉर दैट रीजन आई सजेस्टेड यू मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। And okay, so you are asking कि I mean passing his document to LLM and asking it to classify। No, मतलब ऐसा नहीं है। Now if you have say some lesser number of corpus, then you can do it manually I believe। First मतलब एक सॉर्ट के लिए आप उसको ऐसा एक हिट दे सकते हो, या फिर टॉपिक मॉडलिंग करके देखो एक बार, अगर इफ यू आर नॉट इन अ स्टेट टू क्लासिफाई दोस लेबल्स मैन्युअली। व्हाट आई मीन टू से आप एक बार अल्गोरिदम बना के रखो, अल्गोरिदम बना के यू कैन लाइक use it again and again, so this will be a one time activity, although 400 observation is very less in number, but I mean for that reason you can work with some less number of classes, say 3 या 4 ही classes हो गए, and then you can work with it। या फिर आप उसकी मतलब सम सॉर्ट ऑफ हगिंग फेस से आप कोई सेंटिमेंट प्रेडिक्ट करने का कोशिश करो उसका। एलएलएम्स के साथ भी कर सकते हो, एलएलएम्स के साथ कर रहे हो तो डायरेक्ट ही मतलब अप्रोच करो, तो फिर ये सब क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं लगती मुझे, इफ यू हैव दैट थिंग ऑलरेडी इन योर हैंड। हाउ मच ग्रेड्स आर नेसेसरी टू क्वालिफाई एनी जेने इंटरव्यू? तो ऐसा ग्रेड्स वगैरह तो मैंने मतलब इसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं यार कभी। सॉरी मैंने आई मीन मेरे को ऐसा कभी चीजें आई नहीं मेरे सामने। अह, ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, तो मतलब इसमें अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो आपके ग्रेड्स थोड़े कम या ज्यादा भी हो गए ना तो भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो लोग बहुत कंफ्यूज है इस पर्टिकुलर फील्ड में। देयर आर मेनी ग्रे एरियाज, देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पे लोगों को ही पता नहीं क्या करना है, बस एआई नाम के आगे लगा दिया तो हो गया, बट पीपल आर हाईली कंफ्यूज कि इन चीजों को एक्चुअल प्रोडक्शन में कैसे लेके जाना है। थियरी में तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, बट एक्चुअल प्रोडक्शन में कैसे लेके जाना है, देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स बिहाइंड दैट। आई टोल्ड यू अबाउट इतनी कंसिडरेशन, रेशियल कंसिडरेशन, तो
ये सब चीजें इतनी इजीली हम लोग प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते। अगर किसी ने किसी को से ऐसे रेशियल इश्यूज पे कोई प्रेडिक्शन कर दिया, इफ यू आर फॉलोइंग साइकिट लर्न, तो अगर आप साइकिट लर्न में अगर आप देखोगे लोड डेटा सेट्स में यू हैड दिस बोस्टन डेटा सेट विच वॉज काइंड ऑफ एलिमिनेटेड सम डेज बैक। ओके, व्हाई? आपने बोस्टन डेटा सेट बहुत कॉमन मतलब यूज किया होगा, आई थिंक वो हाउसिंग प्राइस डेटा सेट है। हम लोग लीनियर रिग्रेशन जब भी सबसे पहला एल्गोरिथम सीखते हैं मशीन लर्निंग में, तब हम लोग वो बोस्टन डेटा सेट पे काम करते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट टॉय डेटा सेट एग्जांपल वी कैन लर्न फ्रॉम फॉर एनी एल्गोरिथम। तो उसको बेसिकली सॉर्ट ऑफ बैन कर दिया। द रीजन इज उसमें एक ऐसा वेरिएबल था जिसको मतलब वो किसी रेस या जेंडर के रिलेटेड एक अफिनिटी दिखा रहा था। अफिनिटी एज इन कि अगर एक आप स्पेसिफिक जेंडर के हो तो हाउसिंग प्राइस विल बी सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ कोरिलेट विद योर जेंडर। ओके, व्हिच हैज इंट्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ अ रेशियल बायस या फिर जेंडर बायस आप जिसको बोल सकते हो। तो ये चीजें हो रही है, अभी लोगों के समझ रहा है, ऐसे हम लोग काम नहीं कर सकते। तो जेन है तो भाई भर भर के चीजें दे रहा है, तो इथिकल कंसिडरेशन आर अ बिग थिंग टू वर्क अपॉन। इसलिए जब भी उन्होंने GPT-5 के बारे में बात की है, जिस अगर आपने कॉन्फ्रेंस देखा होगा, GPT-5 इज अ वेरी ह्यूज अपग्रेड फ्रॉम GPT-4, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। तो उसी सेम टाइम पे सैम अल्टमैन हैज फॉर्म्ड अनदर टीम इन ओपन एआई जो एआई एथिक्स एंड कंसिडरेशंस के बारे में मतलब वर्क करेगी कि अगर ये इतना बड़ा मॉडल है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो बहुत ज्यादा रेशियल इश्यूज या इथनिक कंसिडरेशंस को नहीं कंसिडर करेगा, एंड इट विल कम अप एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अ सोसाइटी। ओके, एंड क्या हाउ मच ग्रेड्स की प्रॉब्लम मत रखो। विच थियरी शुड आई लर्न टू क्रैक जेने इंटरव्यू? मैंने बोला एलएलएम्स पढ़ो, एनएलपी पढ़ो। मतलब डिसाइड करो पहले आप एनएलपी के थ्रू जाना चाहते हो, सीवी के थ्रू जाना चाहते हो। सीवी के थ्रू जाना चाहते हो तो उस पर ज्यादा फोकस करो, इस पे कम करो। बेसिक्स दोनों के पता होने चाहिए, बट स्पेशलाइजेशन किसमें करना है वो आपका चॉइस होगा, एनएलपी या सीवी। इज बिल्डिंग एजेंट थ्रू इंटरव्यू। यार कैसे होता है ना कि बेसिकली इसलिए मैं स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा था। सो ही वाज देयर वाज वन पर्सन हु आल्सो सेड ना एनवीडिया नेमो के साथ बिल्ड करो एप्लीकेशन। अब आप बोल रहे हो क्रू के साथ हेल्प करेगा क्या? तो ऐसा ही है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन मार्केट, एवरी कंपनी हैज लॉन्च देयर एपीआई, एंड वो बोल रहे हैं कि आप हमारा एपीआई यूज करो। दे हैव लाइक आस्क्ड मेनी पीपल टू प्रमोट दिस थिंग्स। अगर आप एंड्रो एनजी के कोर्सेज देखोगे, he is making use of lot of like KPI, sorry, APIs which are sponsored by some different companies, right? तो वो जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं है। अगर आप मशीन लर्निंग में जाओगे यू हैव साइकिट लर्न, आप साइकिट लर्न के साथ ही बहुत सारे मॉडल्स बनाओगे, पाई कैरेट हार्डली पिक्चर में आएगा। बट इसमें ऐसा है ही नहीं। इसमें आपके पास नया एलएलएम है, कोई नया लिंग्विस्टिक मॉडल है, आप उसके साथ काम कर रहे हो, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी एरिया जहाँ पे आप किसी को कन्विंस कैसे करोगे मैंने इसके साथ काम किया है, बट अरे उस बंदे को उस बारे में कुछ पता ही नहीं है अगर, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बोथ टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच दिस कॉन्सेप्ट। वो पूछेगा अरे इस एपीआई में होता क्या है, यू आर लाइक कि मैंने तो एपीआई एज इट इज कॉल कर दिया था, मेरे को क्या पता एपीआई के पीछे होता क्या है। तो फिर चीजें थोड़ी रफ हो जाएंगी। बट अगर आप बेसिक ओपन है या फिर स्टैंडर्ड हगिंग फेस एलएलएम्स को स्टिक रहोगे फॉर से डेमो पर्पजेस एटलीस्ट, तो उस केस में अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बर्ड कैसे काम करता है, हगिंग फेस का ये मॉडल कैसे काम करता है, यू विल एटलीस्ट फाइंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन इंटरनेट, यूज केसेस ऑन इंटरनेट, यूट्यूब वीडियोज ऑन इंटरनेट, और एक स्टैंडर्डाइज कंटेंट है उसके बारे में उसको भी पता है, आपको भी पता करना मुश्किल बात नहीं है। तो बेसिकली वो इंटरव्यू एक लाइन पे चलेगा। अगर आप स्पेसिफिक कोई मतलब प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो, क्रियो इज अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। मैंने उसको यूज किया एंड आई डेफिनेटली फील कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट टिल द डेट इट इज नॉट वेरी मच स्टैंडर्डाइज इन द मार्केट कि हर कोई क्रू यूज कर रहा है, जैसे लैंगचेन लामा इंडेक्स हर कोई यूज कर रहा है, राइट? तब तक आप उस पर ज्यादा फोकस मत करो। आप आई मीन इसको गलत मीनिंग से मत लो। व्हाट आई वांट टू से इज यू डोंट focus your entire portfolio on working with Crewware unless it is not that popular in market. You touch upon Crewware, you work on some different API as well. You keep touching upon these points. Okay, it's not like कि आप पूरा मतलब फोकस आपका Crewware पे ही लगा दो। ये कल Crewware मार्केट से निकल जाएगा ना, आपके सारे प्रोजेक्ट्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो फिर आप मतलब कन्विंस कैसे करोगे किसी रिक्रूटर को? तब कोई और नया टेक्नोलॉजी आ गया रहेगा, और ये चीजें तो बहुत स्पीड से बदल रही है, आज ये है कल वो है। तो मतलब मशीन लर्निंग में थोड़ा तो ठहराव था कि भाई कुछ सालों तक लॉजिस्टिक था, कुछ सालों तक ये बूस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग था, कभी एक्सी बूस्ट आया। इसमें तो हर महीने में कोई नया बंदा आता है, बोलता है ये मेरी एपीआई, इसको यूज करो, बस एआई एजेंट बनाओ, रैक एप्लीकेशन बनाओ एंड खत्म। तो ये सब चीजें होती है। इसके लिए ओपन एआई अगर आप यूज करोगे तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। अगर आप लामा वगैरह यूज करोगे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू स्टिक टू दैट इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। सो बेसिकली ओके उमर, आई या सो बेसिकली इस पे इनविटेशंस आते हैं उमर।
हर 15 मतलब सेशन के 15 मिनट पहले आते हैं वो इन्विटेशंस. आई एम नॉट श्योर व्हाई डिड यू नॉट गेट द इन्विटेशन, बट आई थिंक you will get the invitation because I personally received. So when OpenAI is found like Microsoft literally anything is possible. LLM का फाइन ट्यूनिंग इंटरव्यू में पूछा जाता है. यस दैट इज करेक्ट. LLM का फाइन ट्यूनिंग दे विल आस्क इन द इंटरव्यू फॉर श्योर. सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड. रैक्स के बारे में बहुत पूछते हैं, RHLF के बारे में बहुत पूछते हैं. तो ये सब चीजें यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट. So yeah, let's just get started. ओके. सो मतलब मैंने ये नोटबुक ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है. तो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दिस कोड्स. आई विल टेल यू कि ईच कोड का मतलब मीनिंग क्या होता है, इसका एक स्ट्रक्चर कैसे होता है. एंड इसमें बहुत सारे बेसिक एग्जांपल्स भी आपको दिख जाएंगे. सो if you want some advanced notebooks, then I mean give me some times. I will just come up with some more advanced content. Since इसमें again बहुत सारा variation है. I tried covering all the concepts which are related to our course, and yeah, that's it. So इसमें लाइक ये कोड मैंने इसका कुछ पार्ट मैंने बहुत पहले से लिखा हुआ था. उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है अगर मैंने वापस रन करना चाहा तो. द रीजन इज इसके पैकेजेस बहुत स्पीड से चेंज होते हैं. इसके मतलब आज का अपडेटेड वर्जन है उसमें ये कंपेटेबल नहीं है, उसमें वो कंपेटेबल नहीं है, ऐसे बहुत मगजमारी रहता है. ओके. सो आई मीन somehow I standardized the code and ran it. So I'll just show you all the outputs, and you can you just feel free to experiment with your own choice of data and data frames, data sources. कर सकते हो आप आराम से इस नोटबुक के साथ. ओके. देन वी विल जस्ट कम टू द एक्चुअल व्हाट यू से रैग एप्लीकेशन. कैन यू जूम अ बिट? ओके. लेट मी जस्ट रीशेयर इट. आर यू एबल टू सी द एंटायर स्क्रीन नाउ? यस. वन yes or no will do. Someone has reported that he was split able to see the split screen. Now are you able to see the entire screen? Yes, that's right. Okay. श्योर. तो बेसिकली इसमें मैंने लैंगचेन यूज किया है. आई इंटेंडेड टू यूज लामा इंडेक्स, but then I thought like LangChain would be a little easy to start with. I had like one demo with Llama Index as well. If time permits, I will just try to show you that. तो इसमें बेसिकली LangChain में रैग एप्लीकेशन में जैसे मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू लोड द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू ingest the data, then you have to like you know split the data into different chunks with the help of different splitters. Then you can just store it in some sort of a vector base. You have to use some sort of embeddings in order to store it in some vector base. And then you have to use LangChain retriever Q&A chain. देन उसमें रिट्रीवर भी होगा आपका, और फिर आप मतलब क्वेरी करके पूछोगे कि आपका सॉल्यूशन क्या है. ओके. तो इसके लिए ये सारी लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट की थी. नाउ आई सॉ दैट कोहर एम्बेडिंग्स वेयर देयर आर मल्टीपल एम्बेडिंग्स. हगिंग फेस एम्बेडिंग्स भी थी, बट मैंने जब खुद से एक्सपेरिमेंट किया ना हगिंग फेस एम्बेडिंग्स पे बेसिक मॉडल्स को लेके, इट वाज नॉट दैट वेल. और जो एडवांस मॉडल्स थे उसमें बहुत टाइम लग रहा था. So I stick to Cohere embeddings, and then there is OpenAI embeddings. I mean, if you have already, put a money in your account for using OpenAI account, then you can make use of OpenAI embeddings. It's really good. I mean, आपको अच्छे results मिलते हैं. I mean, the embeddings are very much, what do you say, focused, concise, and OpenAI model भी it's very good. So you can make use of that. Olama का मैंने यहाँ पे use किया है for the people who don't know the Olama. सो ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे बेसिकली दे आर होस्टिंग ऑल दी मॉडल्स. लाइक जैसे हगिंग फेस आपका होस्ट करता है ना लामा 3, आपके अलग अलग जो LLMs होते हैं, वैसे ही ओलामा आपको होस्ट मतलब होस्ट कर रहा है आपके मॉडल्स. तो बेसिकली मैंने ओलामा इसके लिए यूज किया. ओलामा से मैंने लामा 3 को यूज करने की कोशिश की है. तो इसके लिए ओलामा किया है.
then I think these all things are just library names and modules name. We can just cover it later. So ये पार्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, इसके लिए मैंने इसको खाली रखा है। LangChain API की यू विल बी एबल टू फाइंड इट इन योर LangChain प्रोफाइल। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आप सेटिंग्स में जाके यू विल बी एबल टू गेट द की। ये कोहर एपीआई की भी आपको कोहर की वेबसाइट पर मिल जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, आई मीन। तो आप यहाँ पे जाके बेसिकली ये मेरा अकाउंट है, आप यहाँ पे जाके कीज बना सकते हो। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, और प्रोडक्शन के लिए यू विल बी चार्ज, बट अगर आप बहुत सिंपल डेमो बनाना चाहते हो तो बेसिकली कोहर इज वन ऑफ द गुड API service you can leverage free of cost again. You are not charging any money. तो मैंने कोहर एपीआई का यूज किया है, ओपन एआई एपीआई का यूज किया है। मैंने ये सब चीजें एग्जीक्यूट करके रखी है, दैट्स व्हाई द कीज आर नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बट ओके। तो ये बेसिकली मेरे दो वर्जन्स थे मॉडल्स के। एक बेसिकली पेड है। पेड में आई एम मेकिंग यूज ऑफ चैट ओपन एआई फॉर एग्जीक्यूटिंग द ओपन एआई LLM, और एम्बेडिंग्स में मैं ओपन एआई एम्बेडिंग्स की बात कर रहा हूँ। और ये फ्री वाला जो वर्जन है दैट इज बेसिकली ओलामा यूज, मतलब ओलामा से वो लामा 3 को कॉल कर रहा है, एंड एम्बेडिंग्स में मैं कोर एम्बेडिंग्स यूज कर रहा हूँ। ओके, यू कैन, यू आर फ्री टू यूज एनी सॉर्ट ऑफ, आप लामा 3 को हगिंग फेस से भी मतलब कॉल कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट हगिंग फेस से एम्बेडिंग्स उठा सकते हो। इट्स अप टू यू। मेरे को ये दो मिला तो मैंने ये दोनों को आई ट्राइड एक्सेसिंग देम। ओके, तो बेसिकली ना ये आपका रैक का एक फ्लो होता है। तो इसमें हम लोग ने, मैंने ये कोशिश किया था, एक रैक का जो अपना रिसर्च पेपर है ना, वो जो हम लोगों ने देखा है थ्रू आउट द कोर्स की, जिसमें डेफिनेशंस है ऑल सॉर्ट ऑफ सिंपल रैक, एडवांस रैक एंड मॉड्यूलर रैक, वो वाला जो रिसर्च पेपर मैंने आपको बताया था ना, वही रिसर्च मैंने लोड करने की कोशिश की यहाँ पे। तो फॉर दैट आई हैव मेड यूज ऑफ आर्क्स वीआईबी लोडर। तो बेसिकली ये वेबसाइट है जहाँ पे इट ट्राइज टू स्टोर ऑल सॉर्ट ऑफ पीडीएफ्स, इनके रिसर्च पेपर जो होते हैं इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स। एंड ये लोड मैक्स डॉक्स एक पैरामीटर है जिसमें यू विल बी एबल टू कंट्रोल कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स लोड करने हैं। एंड इफ यू जस्ट सेट दिस लोड ऑल वेरिएबल मेटा टू ट्रू, बेसिकली आप पूरा का पूरा कंटेंट एक्सेस कर पाते हो। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। ओके, अगर आप इसको क्लोज करके रन करोगे ना, तो बेसिकली यू विल बी एबल टू सी लाइक लिमिटेड कंटेंट। तो मतलब आपका रिसर्च पेपर में बहुत सारे टोकन्स होंगे, उसमें से पहले मतलब एक सर्टन 400 500 2000 के आसपास आपको टोकन्स मिल जाएंगे, जो भी इनका नंबर है। तो यू हैव टू सेट दिस लोड ऑल मेटा डेटा टू ट्रू, देन ओनली यू शुड लोड द कंटेंट। then basically this dot page content is used क्योंकि आपका जो document object है, it's a complex object, it's not a straightforward list. So you have to make use of this dot page content. And फिर basically I'm making use of this recursive chunks character splitter. So there is this TikTok encoder जिसमें आप रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर में, ये स्प्लिटर्स के बारे में मैंने एकदम लास्ट में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। ओके, सो I will perhaps tell you about this splitters and chunkers. तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी जस्ट मैंने मतलब ये LangChain वाले सारे डेमोस को आई ट्राइड एनालाइजिंग है। तो इसमें बेसिकली आई एम जस्ट मेकिंग यूज ऑफ दिस चंक साइज, एंड चंक साइज मेरा जो भी मतलब मैं डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करूंगा, ये वाले जो पीडीएफ है, इट शुड बी 300 का साइज रहेगा, और 50 का ओवरलैप रहेगा। 50 का ओवरलैप एज इन मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सेकेंड डॉक्यूमेंट में उसके जो टॉप 50 कैरेक्टर्स है जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में भी थे, उधर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी म्यूचुअल इंटरसेक्शन वाला थिंग। सो लेट मी जस्ट शो यू इफ आई रन इट। ये वाला जो है, इसमें आप बेसिकली वेक्टर स्टोर यूज कर रहे हो। आप मैंने यहाँ पे क्रोमा यूज किया है। तो क्रोमा में मतलब मैंने पहले स्प्लिट किया डेटा को, देन नेक्स्ट बारी आती है आपकी डेटा को वेक्टर स्टोर में सेव करने की। उसके लिए आपको कुछ एम्बेडिंग्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एम्बेडिंग्स का यूज किया है, एंड आई हैव एक्सप्लिटेड द डेटा, एंड देन द लास्ट स्टेप आई हैव मेड यूज ऑफ रिट्रीवर। ओके, तो रैग्स में आपके ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, एंड देन देयर इज बेसिकली वन मोर स्टेप व्हिच इज डेडिकेटेड टू प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट देते हो। ओके, तो बेसिकली आप ये हब से
ये प्रॉम्प्ट्स को पुल कर सकते हो। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देयर आर मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स स्टोर ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो आपको खुद से प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, आप ये एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। देन बेसिकली एक रैक चेन होता है। तो रैक चेन में होता क्या है कि इट इज काइंड ऑफ अ चेन। तो चेन में आपके पास मल्टीपल आपके जो कंपोनेंट्स है, दोज विल बी लिंक्ड विद ईच अदर। ओके। जैसे बेसिकली अगर आपको कंटेक्स्ट लेना है तो आप कंटेक्स्ट रिट्रीवर से लोगे। आपका जो रिट्रीवर है दैट विल बेसिकली गिव यू द कंटेक्स्ट फॉर आंसर फॉर्मेशन। ओके। फॉर्मेट डॉक्स जो है वो यहाँ पे बेसिकली मैंने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था। मतलब इट्स नॉट, आई डिड नॉट डिफाइन इट, बेसिकली आई गॉट इट फ्रॉम द कोड। बेसिकली यहाँ पे क्या करता है वो, सारे जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है, इट विल ट्राई टू जॉइन देम विद द काइंड ऑफ डबल स्लैश एन, मतलब डबल लाइन से वो उसको ज्वाइन करेगा। ये मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि जो भी रिट्रीवर से मेरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको उस फॉर्मेट में बेसिकली वट एवर आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम द रिट्रीवर, इट इज जस्ट ये फंक्शन उसको अप्लाई करेगा रिट्रीवर वाले आंसर को। ओके। देन यू हैव दिस क्वेश्चन एंड इट इज टेकिंग थ्रू दिस रनेबल पास थ्रू फंक्शन। आपके पास प्रॉम्प्ट है, आपके पास एलएलएम है, और आपके पास एसटीआर आउट पार्सर है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड चेन का व्हाट यू से स्ट्रक्चर होता है। एंड अगर मैंने इसको क्वेरी करना चाहा व्हाट इट मींस बाय मॉड्यूलर रैक, तो बेसिकली ये मेरे को ऐसे आंसर देता है। तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले वो टॉप के डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको ज्वाइन करेगा। ओके। देन इट विल मेक यूज ऑफ द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैंने क्या बोला था, ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है, इट विल जस्ट ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। कि ये प्रॉम्प्ट में ऐसी चीजें होती है कि यू आर लाइक अ बेसिकली एआई मॉडल, whose job is to come up with a Q&A answering system. तो बेसिकली यू शुड प्रोवाइड आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट विच इज प्रोवाइडेड। तो ये बेसिकली एक प्रॉम्प्ट है। तो ये प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये नेक्स्ट स्टेज पे एलएलएम पे जाता है। एलएलएम के जाने के बाद इट विल जस्ट पास इट थ्रू द आउटपुट पार्सर, एंड आपको ये बेसिकली मतलब जनरेटेड आंसर मिल जाता है। ओके। सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस इन विच यू कैन बिल्ड अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैग। तो ये सबसे बेसिक रैग है, सबसे बेसिक। मतलब इसमें कुछ हम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ओके। तो अगर आपको मतलब 7 या 8 लाइन में रैक का कोड लिखना है तो ये वैसे दिखेगा। यहाँ पे आपको डेटा लोड करना है, फिर आपको मेटा डेटा कॉम्प्लेक्स करना है। तो ये मैंने इसके लिए यूज किया था बिकॉज देयर वेर सम इशू विच आई वाज फेसिंग कि उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे डेटा लोड करने में। दिस इज नॉट अ वेरी नेसेसरी स्टेप, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आई मीन यू कैन जस्ट इग्नोर दिस स्टेप। You can just directly load these documents from here and just pass it through the recursive character splitter or whatever splitter you are basically trying to use. And then you can just store it within some sort of a vector store. You can make use of some sort of a retriever. You can just give this prompt एज अ मैनुअल प्रॉम्प्ट, आप खुद से भी दे सकते हो या फिर आप इस हब से पुल कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, यू कैन जस्ट गो टू दैट वेबसाइट एंड यू जस्ट सर्च कि वो कौन से प्रॉम्प्ट्स होते हैं। यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ ऑल दिस प्रॉम्प्ट्स, और अगर आपको स्पेसिफिक खुद का प्रॉम्प्ट देना आप दे सकते हो। ओके। एंड देन बेसिकली दिस इज द चेन जो आपका रैक का आर्किटेक्चर को डिस्प्ले करता है। आप रिट्रीवर से कॉन्टेक्स्ट लोगे, वो कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्स फंक्शन में से फॉर्मेट हो जाएगा। बेसिकली ऑल द कंटेंट्स विल बी जॉइंड इन डबल स्लैश एन सेपरेशन। देन आप क्वेश्चन को इस फंक्शन के थ्रू पास करोगे, आपके पास प्रॉम्प्ट है जो आपने यहाँ पे कॉल किया था, आपके पास एलएलएम है, एंड देन यू हैव आउटपुट पार्सर जो विच विल गिव यू द फाइनल आउटपुट। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आई जस्ट आई मीन गिव अ वेरी बेसिक एग्जांपल, आप प्रॉम्प्ट को कैसे डिफाइन करते हो। तो ये मेरा टेम्पलेट है। प्रॉम्प्ट, देयर आर मल्टीपल टाइप्स इन विच यू कैन डिफाइन अ प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैंने सीधा वो हब से पुल किया था, बट आप खुद से भी मतलब प्रॉम्प्ट डिफाइन कर सकते हो। दिस इज हाउ इट विल लुक। So you are a question Q&A answering assistant. You will refer the context provided, answer the questions. If you don't know the answer, reply that you don't know the answer. So it will be very basically a very standardized process. Prompt का ना एक बहुत अच्छा फायदा, मतलब आपका कस्टम प्रॉम्प्ट देने का एक बहुत अच्छा फायदा क्या होता है कि आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच हैड लाइक हम लोग एलएलएम यूज कर रहे थे इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द ब्रांड आउट ऑफ अ रिव्यू। ओके। तो उसका जो आंसर होता है ना वो बहुत वेग देता है। अभी मेरे को ब्रांड जो एक्सट्रैक्ट करके रखना है वो मेरे को एक कॉलम में स्टोर करना है। करेक्ट। अगर वो मेरे को बहुत वेग आंसर देगा तो मैं बाद में उसको सेपरेट कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे फर्दर एनालिसिस के लिए चाहिए वो एंटिटी एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो उसके लिए यू हैव टू समटाइम्स स्पेसिफाई पर्टिकुलर आंसर की अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी ब्रांड, जस्ट रिटर्न एन, या फिर यू कैन गिव योर कस्टमाइज सोल्यूशन जो भी आपको लगता है। तो बेसिकली उसमें क्या रहेगा, वो अपना जो फॉर्मेट है ना वो बहुत कंसाइज रखेगा।
मतलब मैंने ऐसा देखा था, हम लोग जब ऐसे प्रिसाइज प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे थे तो ऐसा कर रहे थे जहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट नहीं, मतलब आंसर नहीं मिल रहा है ना, इट यूज्ड टू गिव अस रिटर्न कि यार आई लाइक लुक्ड इन द डेटा, देयर वाज नो ब्रांड सिमिलर टू दिस ब्रांड फाउंड, although these were the मैचिंग सजेशंस। अभी मैं इसको डेटा फ्रेम में मैनिपुलेट मतलब फॉर्मेट कैसे करूंगा? सो आई जस्ट गिव हिम एन इंस्ट्रक्शन कि बॉस तेरे को मेरे को सिर्फ ब्रांड नेम देना है और कुछ नहीं देना है, एंड इफ यू डोंट फाइंड एनी ब्रांड नेम जस्ट रिटर्न मी एन। तो उस प्रॉम्प्ट से बेनिफिट क्या हुआ, जब भी मेरा मतलब जब मैंने प्रॉम्प्ट को वापस मतलब यूज करके रन किया, दैट टाइम आई वाज गेटिंग जस्ट आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स ओनली, जिसको मेरे को प्रोसेस करना बहुत आसान हो रहा। वरना एलएलएम्स के आउटपुट बहुत वेग हो सकते हैं, बहुत कुछ मतलब वो चीजें बता सकते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू समटाइम्स स्पेसिफाई द प्रॉम्प्ट इन अ वेरी नाइस एंड प्रॉपर फैशन इफ यू आर वर्किंग विद अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ प्रिसाइज आउटपुट, जिसमें आपको बहुत प्रिसाइज आउटपुट चाहिए। अगर आप टेक्स्ट डेटा के साथ बात कर रहे हो, मतलब कोई तो ऐसे मतलब व्हाट यू से क्वेश्चन आंसरिंग चीजों के साथ काम करो, देन एट दैट टाइम इट वर्क्स, आप कोई भी प्रॉम्प्ट देके काम कर सकते हो। बट जब मैसेज जैसे मैंने मैंने क्वेरी में बताया था, वैसे केस में यू हैव टू गिव अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स एज वेल। ये एक मल्टी क्वेरी पर्सपेक्टिव है। ओके, मल्टी क्वेरी पर्सपेक्टिव में मैं जैसे बोला था, मॉड्यूलर रैक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मॉड्यूलर रैक में मैंने बोला था कि हम लोग कौन सी चीजों पे काम करते हैं। वी ट्राई टू वर्क ऑन क्वेरी, वी ट्राई टू वर्क ऑन द प्रॉम्प्ट। हम लोग प्रॉम्प्ट पे कंप्रेशन करते हैं, हम लोग क्वेरीज पे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, क्वेरीज पे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, एंड सो ऑन। वी हैड लुक्ड एट मल्टीपल अप्रोचेस, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू वन ऑफ द अप्रोच। सो मल्टी क्वेरी अप्रोचेस, अप्रोच जहाँ पे आप क्या करते हो, मतलब चीजों को मल्टीपल इसमें डिवाइड करते हो। सो अगर आप प्रॉम्प्ट देखोगे, so prompt looks like this: you are an AI model assistant. Your task is to different 5 different versions of the given user questions. Okay, by generating multiple perspective on the user question. So हाँ, ये जो मैं नोटबुक आपको दिखा रहा हूँ ना, you might feel कि अरे एग्जीक्यूट करके क्यों नहीं बता रहा है। The point is, uh, I have like set it up all these things in a specific fashion and I'm leaving it up to you. आप इस नोटबुक को यूज करो, जैसे आपको इसके साथ खेलना है वैसे खेलो। आपके जो भी कस्टम प्रॉम्प्ट्स है आप इसको यूज कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसके पीछे का लॉजिक या फिर कमांड्स के पीछे का आंसर क्या होता है। ओके, so I'm just trying to take you through this, so you can make use of these notebooks as you want, and you can just play around it. So basically इसमें हम लोग करने के वाले, एक क्वेश्चन होगा उसमें से हम लोग 5 डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। वो 5 डिफरेंट क्वेश्चंस के जो हम लोग आंसर्स होंगे उनको कंबाइन करके वी विल ट्राई टू पास इट टू द एलएलएम, और वो जो अपना आंसर होगा दैट विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस 5 डिफरेंट आंसर्स। ओके, सो मैंने इसको शायद से हाँ प्रिंट किया है। सो बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूंगा कि व्हाट इज मॉड्यूलर रैक, ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। तो उस केस में ओके, हियर तो आई थिंक आई हैव प्रिंटेड समथिंग रॉन्ग। दिस इज तो बेसिकली a retrieval approach. I haven't printed the questions. Let me just check. Okay, I think I forgot I forgot to print the questions जो मेरा मेन टास्क था। बेसिकली यहाँ पे इट इज अगेन गिविंग द आंसर्स, मतलब वो मल्टी क्वेरी पर्सपेक्टिव का यूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अलग अलग बेसिकली इट इज क्रिएटिंग दी मल्टीपल क्वेरीज, देन इट इज पासिंग मल्टीपल क्वेरीज टू दी रिट्रीवर, एंड रिट्रीवर से मल्टीपल आंसर लेके इट इज बेसिकली क्रिएटिंग दिस आंसर। सो बेसिकली दीज आर दी फाइनल डॉक्स विच आई एम गेटिंग। तो अगर मैं मल्टीपल क्वेश्चंस की बात करूंगा तो आई विल बी गेटिंग दीज काइंड ऑफ आंसर्स। बट लेट मी करेक्ट दिस एंड परहैप्स आई कैन जस्ट शेयर द करेक्टेड वर्जन जहाँ पे मैंने मल्टी क्वेरी को मैं प्रिंट करूंगा एक्चुअली क्वेश्चंस क्या बनता है। आई थिंक मैंने किया था नीचे, लेट मी जस्ट चेक इट। यू कैन जस्ट लुक इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, डोंट वरी, अगर ये नोटबुक में कुछ इश्यूज भी होंगे तो भी मैं आई विल जस्ट करेक्ट इट फ्रॉम माय एंड, देन ओनली आई विल जस्ट गिव इट टू यू। ओके, सो देन देयर इज दिस वन थिंग जहाँ पे बेसिकली मैंने ऊपर वाले रिट्रीवल चेन का यूज किया था। अगेन मैं हर जगह पे सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग a different point out of it. I'm just trying to make the same question again and again so that we will be able to understand कि हर जगह पे रिस्पॉन्स कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक लुक एट दिस आंसर, अगर आप मतलब इसका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि मतलब रैक का एक अच्छी बात यह है कि आप जैसे अलग अलग अप्रोचेस यूज करोगे, मल्टी क्वेरी अप्रोच यूज करोगे आपको अलग आंसर मिलेगा। अगर आप सेल्फ क्वेरी यूज करोगे अलग आंसर मिलेगा, एंड देन सो ऑन। सो बेसिकली इट्स अ varied answer. You are not going to get a consistent answer if you are making some different approaches. So this is the beauty. You can just try and test it out with all sort of your custom things around it. Then there is this decomposition. तो decomposition में हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, basically we are going to split the same question in different different formats.
तो मल्टी क्वेरी में होता क्या है ना, मल्टी क्वेरी में बेसिकली मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मल्टीपल क्वेश्चंस लीड टू दी व्हाट यू से सिंगल आंसर होंगे, उनके मल्टीपल आंसर्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन इट विल गिव यू द सिंगल आंसर। बट इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज। ओके, सो इस केस में हो ऐसे रहा है कि अगर मैंने पूछना चाहा कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉड्यूलर रैक सिस्टम, और मैंने यहाँ पे बोला है कि यू हैव टू लाइक what you say decompose this query into three different questions. Okay, and all these sub questions that can be answered in a isolation, मतलब individually उसको answer करना है, तो it will create sub questions like this. So basically ये सारी चीजें है ना, ये आपकी एडवांस रैग और मॉड्यूलर रैग में कवर होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मतलब हम लोग को क्वेरी पे काम करना है, क्वेरी को चेंज करना है, या फिर मतलब हम लोग को प्रॉम्प्ट पे कंप्रेशन करना है एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये सब चीजें यहाँ पे होती है, जहाँ पे आप मतलब एक क्वेश्चन को थ्री डिफरेंट क्वेरीज में यू आर बेसिकली ट्राइंग टू स्प्लिट। ओके, एंड देन परहैप्स यू कैन गेट आंसर आउट ऑफ दैट। तो अभी इसमें कैसे होता है, ये जो तीन क्वेश्चंस है उसके लिए आपको आंसर्स मिलेंगे, तो ये बेसिकली क्यू एन ए आंसरिंग सिस्टम हो गया, क्यू एन ए पेयर हो गया, जिसमें हम लोग बेसिकली आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आप देखोगे ये जो कोड है, अगेन ये कोड मैंने नहीं लिखा है टू बी ऑनेस्ट, ये लैंगचेन के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे देयर आर मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल, सो आई लाइक पिक द कोड फ्रॉम देयर। आई मेड सम फ्यू ऑफ द चेंजेस, बट इट्स लाइक ये एंटायर कोड मेरा नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो आई मीन दे हैव वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप मतलब चीजों को देखने जाओगे ना, यू विल बी एबल टू सी मेनी नंबर ऑफ थिंग्स। तो जैसे मैंने अभी क्वेरी को डिकम्पोज किया, ओके, तो बेसिकली क्या करेगा, वो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर देगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट इज अ मॉड्यूलर रैग एंड हाउ डज इट फंक्शन। ओके, तो ये बेसिकली उसके डिफरेंट क्वेश्चंस है। तो बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन वन था, ये क्वेश्चन टू है, देन वी विल बी एबल टू सी क्वेश्चन थ्री भी था ना यार, हाँ ये क्वेश्चन थ्री है। ओके, सो यू विल बी एबल टू सी लाइक मल्टीपल आंसर्स फॉर अ सिंगल क्वेरी। अगर आप मतलब देखोगे तो आपका मेन क्वेश्चन क्या था, आपका मेन क्वेश्चन था व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मॉड्यूलर रैक सिस्टम। ओके, तो आपको इस क्वेरी को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना था, तो इसके लिए आपने तीन क्वेरीज बनाई, व्हाट इज मॉड्यूलर रैक सिस्टम, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ मॉड्यूलर रैक सिस्टम वर्क टुगेदर टू अचीव इंटेंडेड पर्पस। ये it is not necessary that these queries are actually correct. Okay, you have to again work on like query generation in a different fashion. So I mean इसको आप और ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक इसमें प्रॉम्प्ट दे सकते हो, but this is the highest accuracy with which I got the results. You can just play with some sort of different set of questions and let me know your outputs. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस है एंड मल्टीपल आंसर्स है, मैंने नीचे भी उसको प्रिंट करके रखा है। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा फाइनल आंसर है। Okay, तो बेसिकली इसमें किया क्या है, इसने क्यू एन ए पेयरिंग अप्रोच यूज किया है। तो हर क्वेश्चन के लिए एक नया आंसर दिया है इसने, ये क्वेश्चन वन है तो उसके लिए एक आंसर दिया है, क्वेश्चन टू है तो उसके लिए एक आंसर दिया है, एंड क्वेश्चन थ्री है उसके लिए एक आंसर दिया है। ओके, आ गया क्वेश्चन थ्री, ये हो गया क्वेश्चन थ्री। ओके, तो इसमें हर जगह पे अलग अलग आंसर दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था अपना, तो मतलब हम लोगों ने उस क्वेश्चन को डिफरेंट सब क्वेश्चंस में भी ट्राई डिवाइडिंग इट, एंड देन वी गॉट द आंसर्स फॉर ईच एंड एवरी क्यू एन ए पेयर। ओके, और हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जो अपना फाइनल आंसर होगा ना, दैट विल बी काइंड ऑफ हम लोग उसको चेन में से पास करेंगे, हम लोग उस चेन में क्या डालेंगे, क्वेश्चंस, अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको डालेंगे, नो नॉट ओरिजिनल क्वेश्चंस, हम लोग के जो लूप वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री वो डालेंगे, एंड देन हम लोग ये क्यू एन ए पेयर्स डालेंगे उसमें। ओके, तो बेसिकली अपना जो फाइनल आंसर है दैट विल बेसिकली टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल सॉर्ट ऑफ व्हाट यू से दिस डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। Okay? Again you can just try asking some different questions. So basically हम लोगों ने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, we divided into multiple sub questions, for each question we got an answer and then we finally combined all the answers together in order to create a one single answer for the individual question. Okay, यहाँ पे ये बेसिकली ये पार्ट में we are basically trying to answer all the sub questions individually. Okay, what I mean by that is इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आई थिंक सो ये भी गलत है, ठीक है ये गलत है, आई विल जस्ट ट्राई टू लाइक करेक्ट इट। सिंस इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो जो सारे सब क्वेश्चंस बना रहा है ना उसको बेसिकली
it is trying to answer it, and but it is not, trying to answer it very individually. I need to see यहाँ पे मैंने क्या miss कर दिया, perhaps. Don't worry, I will just try to correct it, and I will just share the corrected answer or corrected code with you. Then there is this thing which is known as hide. Hide is basically hypothetical document आपका जो last time discuss किया था. So इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ओके, और उस नकली डॉक्यूमेंट्स मतलब हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट से हम लोग आंसर खोजने का कोशिश करते हैं. तो इसमें हम लोगों ने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, प्लीज राइट अ साइंटिफिक पेपर पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन. तो अपना जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके लिए हम लोग एलएलएम को बोल रहे हैं कि भाई तू ये कोई तो पैराग्राफ बना, और उस पैराग्राफ में जो भी यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ना, तो उसको जस्ट जस्ट गिव इट टू अस. ओके, सो दिस इज द टेम्पलेट, एंड वी आर बेसिकली मेकिंग यूज ऑफ रैक. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, अगेन यार मैंने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट नहीं किया. डोंट वरी, आई मीन मेरे को पता है ये थोड़ा मतलब नोटबुक मैंने बहुत घाई घाई में बनाया है, तो आई नीड टू वर्क ऑन दिस प्रॉपर प्रिंटिंग ऑफ आउटपुट्स विच आई अंडरस्टैंड. तो मैं इसको आपको करेक्ट करके दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. तो इसमें उसने क्या किया, बेसिकली ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज मॉड्यूलर रैक बाय क्रिएटिंग वन मोर डमी आर्टिकल ऑन मॉड्यूलर रैक. ओके, फिर वो बेसिकली वो डमी आर्टिकल का यूज करके इट हैज ट्राइड आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ओके, इसमें अलग आंसर है, जो आपका फर्स्ट अप्रोच होगा उसमें अलग आंसर होगा. आई डिड नॉट प्रिंट द hypothetical document. Perhaps I will have to print it so that you will be able to understand the thing in a better fashion. Then I have made use of Rack Fusion. So Rack Fusion में होता क्या है कि वो मल्टीपल सर्च क्वेरीज को बनाने की कोशिश करता है. अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू डीकम्पोजिशन. ये अगर आप चीज देखोगे ना, तो ये बहुत सिमिलर चीजें है, इसमें बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है. ओके, तो आप बेसिकली यूज क्या करते हो, आप एक ही क्वेरी को मल्टीपल टाइम स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको मतलब प्रिसाइज आंसर मिले. तो सम टाइम्स आपको कुछ प्रोसेस में क्या होता है, आप हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल आंसर लेके आओगे और इंडिविजुअल आंसर्स को कंबाइन करके एक फाइनल आंसर बनाओगे. कोई मेथड्स में क्या होता है, आप हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल आंसर लेके आओगे, उस आंसर को नेक्स्ट आंसर के साथ मतलब यू विल ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ पास करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ पास करोगे, एंड देन जो आपका फाइनल आंसर के साथ जो ऊपर वाले दो जो कॉन्केट होके आए हैं उसको आप फाइनल आंसर बोलोगे. ओके, दीज आर वेरी सिमिलर एनालॉजीज बट द पॉइंट इज दे आर लिटिल डिफरेंट इन नेचर. ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन फंक्शन. सो इसमें इसका पर्पस ये होता है कि इट टेक्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड देन इट बेसिकली ट्राइज टू रैंक देम. ओके, तो रैंक का बेसिकली आई मीन दे हैव a formula where it tries to calculate this fused score. So I mean, and then it basically tries to rank the documents. Okay, सो अगर आप देखोगे मॉड्यूलर रैक का, बेसिकली अगेन दिस इज द आउटपुट वेयर आई एम एबल टू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स. तो ये मेरा स्कोर हो गया पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, एंड सो ऑन. सो अगर आप देखोगे हर जो डॉक्यूमेंट उसने एक्सट्रैक्ट किया है, इट विल गिव यू द प्रॉपर स्कोर्स पर्टेनिंग टू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, एंड देन you will be able to understand कि कौन सा relevant है कौन सा नहीं है, and then you can just perhaps sort it or put a threshold on it in order to come up with its relevance. ये इसको बोलते हैं हम लोग रैंक फ्यूजन स्कोर बोलते हैं इसको, सॉरी रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन स्कोर. So you can see for this document it's 0.16, for first one it was 0.24 and so on. Okay. तो ये भी I think this is a valid problem. हाँ, इसमें हम लोग बेसिकली इसका यूज कर रहे हैं. तो मतलब यार देखो कैसा होता है ना, स्ट्रक्चर हर जगह पे सेम है. मतलब ये तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता है इसमें, ये हर जगह पे सेम ही रहता है. इट्स लाइक सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या पास करते हो ना, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ पासिंग द कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो आपने जो सबसे पहले देखा था ना, ये वाला कोड हर जगह पे सेम ही रहेगा. इट्स लाइक ये वाला जो पार्ट है ना ये चेंज होता जाएगा. अभी मैं यहाँ पे रैक फ्यूजन यूज कर रहा हूँ. रैक फ्यूजन के लिए मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेसिप्रोकल रैंक फंक्शन का यूज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू कम अप विद द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई वांट. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे मेरे को मिल गए, एंड बेसिकली मैं ये वाला पार्ट तो सेम ही है. तो मैं ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मिले जो मैंने रैंक रेसिप्रोकल फ्यूजन स्कोर के साथ जनरेट किए थे, उनको मैं यूज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू गेट आंसर फॉर माय क्वेश्चन. तो अगर आप देखोगे, अगर ये मेथड आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे टॉप के की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो. मतलब इट्स एन ऑप्शनल पैरामीटर, यू कैन जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स एंड सी द रिजल्ट्स. इट इज बेसिकली यूज्ड इन कैलकुलेशन. अगर आप देखोगे तो बेसिकली इट इज पेनलाइजिंग योर सॉर्ट ऑफ मॉडल, नॉट अ मॉडल, स्कोर बेसिकली. ओके,
तो अगर आपने इस मेथड से व्हाट यू से इफ यू ट्राई टू रिट्रीव यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ आंसर. सो इफ यू आर एबल टू सी हर मेथड में अगर हम लोग जो भी मेथड्स कर रहे हैं उसमें हम लोग को अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं. ओके. देन हाँ, इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, इसमें वी ट्राई टू वर्क ऑन सम फ्रॉम कंप्रेशन पे हम लोगों ने काम किया था. तो here we are making use of the compressor which is making use of the Coher re-ranker. और हम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जो मतलब वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस कोहर री-रैंकर ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रीवर. तो हम लोग रिट्रीवर पे बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ऐड एक्स्ट्रा लेयर विच इज ऑफ कोहर री-रैंकर. एंड देन वी आर बेसिकली राइटिंग डाउन ऑल द कंप्रेस्ड डॉक्यूमेंट्स. तो जैसे मैंने बोला था, यू आर मेकिंग यूज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रैंकर्स एट द फर्स्ट स्टेज, एंड देन उसके ऊपर आई एम जस्ट मेकिंग सम compression retriever. I'm not making use of prompt compression here. I'm so sorry. I used the incorrect word. I am using it on sort of retriever. Okay. So basically मेरे को ये सारे documents मिलेंगे if I am making use of this Coher re-ranker on the existing re-ranker. Okay. डोंट वरी, मैं नोटबुक दे दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ो. तो इसमें बेसिकली ट्राइज टू कैलकुलेट द रिलेवेंस स्कोर. अगर आप मतलब re-ranker यूज कर रहे हो उसके ऊपर, यू विल बी एबल टू सी ऑल सॉर्ट ऑफ relevance score and documents will be arranged on the basis of relevance score. Okay. So this is one of the method you can use in order to apply a one more stage of filtering and so on. Then here basically हम लोग, हाँ मतलब मैंने basically ये सारी चीजें ढूंढी थी जो हम लोग एडवांस रैंक और मॉड्यूलर रैंक में कवर करने का कोशिश किए थे. So we tried to cover Coher re-ranker, we tried to cover all sort of decomposition, फिर आपका multi-query approach हो गया, and so on. Okay, I tried covering all sort of basic examples out of it. You will have your notebook. You can just experiment with this notebook and try to get all sort of different documents. You make your own say readings out of it. Uh, I mean, there are multiple components of this. You feel free to run these things. I have already covered all these things in theory. Okay, यहाँ से हम लोग बेसिकली स्प्लिटर्स या चंक स्प्लिटिंग के बारे में बात करना शुरू कर देंगे. तो ये मैंने एक ऐसे ही पैराग्राफ था जो चैट जीपीटी के साथ लिखवाया था. तो उसमें व्हाट आई डिड इज बेसिकली आई जस्ट क्रिएटेड अ रैंडम पैसेज जिसमें हम लोग क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे. तो इफ यू जस्ट सी, दिस इज अ टेक्स्ट व्हिच यूजेस लाइक आपके पास वो जैसे क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, and in the last it is basically talking about the politics. Because we had elections as well as the World Cup at the same time. So there are different way of splitting the data. Okay, so I mean someone was asking like chunking के strategies कौन से अच्छे होते हैं. Last time someone has asked me, right? So basically I mean these are some of the strategies which you can think of. So सबसे basic is basically character stack splitting. तो इसमें हम लोग कुछ ज्यादा मतलब अजीब चीज नहीं करेंगे. हम लोग बेसिक मतलब जो अपना मैनुअल स्प्लिटिंग होता है उसको हम लोग यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग एक चंक साइज डिफाइन करते हैं 35. आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, 40 45 आपका जो भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी स्प्लिट्स यू वांट. एंड देन आई हैव जस्ट डन अ वेरी बेसिक थिंग जिसमें मैंने स्प्लिट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रिंग एंड ऑन द इंडेक्स. ओके. एंड फिर उसको मैंने स्टोर किया है एज अ चंक्स. सो हमेशा याद रखना, डॉक मतलब आप लैंगचेन कभी भी यूज करते हो तो लैंगचेन में आपको हमेशा डेटा जो होता है यू हैव टू स्टोर इट इन सम सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. बिकॉज लैंगचेन tries to access all sort of documents and not the simple text. इस पे I mean if you just try to pass on the simple text then it will be very difficult. I mean LangChain के साथ पर आपको बहुत अलग चीजें करनी पड़ती है if you are just passing it as a simple text. So for that you have to cover the text in this wrapper which is converting your text into a document. Okay, and फिर आप document में convert करने के बाद you are basically you will be able to operate with that particular text. तो यहाँ पे it's a very basic what do you say text splitter जिसमें अगर आप देखोगे तो this is basically the content which is it is splitting. And I mean there is no overlap as such. I mean it is just a very normal split it is working across. It's a very straightforward thing. So basically हर content में it is trying to split the document. So यहाँ पे आप देख सकते हो there are different
व्हाट यू से कैरेक्टर लेंथ जिस पे इसने स्प्लिट किया है, just go and read about how this particular splits are. So it's like just a manual splitting. इसमें कुछ है नहीं वैसे ज्यादा. I mean, I'm just making a very basic split on the basis of characters I have. I'm just iterating over different loops. Then there comes this recursive character text splitting. तो recursive character text splitting में होता क्या है कि आपके पास एक some sort of overlap होता है. Okay. ओवरलैप क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है, आई मीन अगर मैं इस टेक्स्ट की बात करना चाहूँ, तो बेसिकली अगर मेरा पहला चंक यहाँ पे खत्म हो रहा है, दिस इज माय फर्स्ट चंक. ओके, तो जो मेरा सेकंड चंक होगा ना, इट वोंट स्टार्ट फ्रॉम दिस. आई मीन इफ आई एम मेंशनिंग द चंक ओवरलैप एज 0, देन वो यहाँ से स्टार्ट होगा. बट इफ आई एम मेंशनिंग सम चंक ओवरलैप से लाइक 10 15 20, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो बेसिकली ये जो कैरेक्टर्स है, अगर मैंने 20 दे दिया, तो अगर से सपोज दिया 20 कैरेक्टर्स, ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो मतलब चंक होगा, इट विल लुक लाइक दिस. ओके, सो मतलब इसमें ये सारा टेक्स्ट इंक्लूड होगा जो पहले के टेक्स्ट में भी था. उसमें होता क्या है, आप बेटर कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन कर पाते हो इन केस ऑफ लार्ज डॉक्यूमेंट्स. बेसिकली रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग में इफ यू जस्ट सी इन 2024 ये इलेक्शंस तक स्प्लिट हो गया है. अभी यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने कैरेक्टर चंक ओवरलैप 0 दिया था, बट इफ यू जस्ट मेंशन इट से लाइक 100 50, then you will be able to see like overlap between two what do you say documents. Okay, देन ये थर्ड वाला एक स्प्लिटिंग है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटिंग यूज करते हैं. तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होता है, बेसिकली इट इज पर्टेनिंग टू सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट. Okay, so it might be a markdown text, it might be a say proper programming language text. Okay, so यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अपना नॉर्मली दिया है जो ऊपर इंडिया वाला पैराग्राफ दिया था. एंड यू कैन मेक यूज ऑफ दिस मार्कडाउन टेक्स्ट स्प्लिटर, ये मैंने नीचे प्रिंट किया है, यू जस्ट ट्राई टू सी इट. एंड यू कैन जस्ट ऑल्सो, अगर आपके पास कोई मतलब कोडिंग टाइप्स ऐसा कोई टेक्स्ट है, तो आप उसको भी बेसिकली स्प्लिट कर सकते हो. बेसिकली फॉर दैट यू हैव डिफरेंट text splitters like Python code अगर split करना है तो Python code text splitter is there. Then Java का करना है तो there is one more, I mean, splitter where you can make use of splitting the documents on the basis of code. तो ये अपना पैराग्राफ था. इसको हम लोगों ने बेसिकली we tried to split it on the markdown text splitter. markdown text splitter के साथ अगर आप डेटा को स्प्लिट करोगे तो it will look like this. देन अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो ये मेरा प्रोग्राम था. It got splitted like this. So I mean it has a basically inherent understanding of like what to be split. If you are marking a particular say character, if you are giving a particular language and a chunk size and a chunk overlap, it will try to split on the basis of that. So there is nothing to be explained in this. I mean it's very straightforward. You can just relate with this all sort of text. कि ये text को ये basically split कैसे करता है. Okay, so you will be able to see that this is the place where it is splitting the Java script का जो उसका content है, it is basically splitting. And if you are able to see, यहाँ पे जो भी आपके tables content है, these are in the document format. कि अगर आप blank check के साथ काम कर रहे हो तो हमेशा याद रखना आपकी चीजों को document format में, not in the format of usual text. Then this is the most important chunking technology, sorry, chunking method, जिसमें आप semantic chunking यूज करते हो. तो semantic chunker is basically chunker which basically tries to group all the documents which are contextually similar, and the documents which are contextually not similar, they will be put into different groups. Okay, so basically यहाँ पे different types होते हैं. You can make use of percentile, you can make use of standard deviation, you can make use of interquartile. तो ये threshold होता है कि कहाँ पे आपको चीजों को split करना है. तो basically uh, matlab whatever understanding it got from the actual text, it tried to split the text into these two chunks. So first one was the India 2024 May. It is trying to focus on Cricket World Cup.
and no, I think this is not a very clear text. Okay, so यहाँ पे it is like somehow understanding that these are some sort of a very much sentences related to actual politics and cricket, while these statements are not. No, it's not like that. I think it is not able to understand the contextual gap between these two things. Perhaps I was supposed to produce some more text. Yeah, I mean, I can just come up with some more text where we will be able to see like the results on how semantic chunking works. So जब डेटा कम होता है, it might not be able to produce such good results. Since इसमें ऐसा हो रहा है ना, इसमें ऐसे बहुत सारे sentences है जिसमें politics भी है और cricket भी है, तो उसको separate नहीं कर पा रहा है. But if you have very clear statements which are related to politics and if you have very clear statements which are related to cricket, then वो जहाँ even though its sequence is not correct, it will try to specify, I mean, separate the what do you say chunks on the basis of semantic understanding. Okay? So I again told you that there are no concrete answers. You have to keep on experimenting on these things, and then perhaps you can make use of different thresholds. You can make use of different standard deviation, interquartile, and percentile approaches in order to come up with uh, the semantic chunkers where you are getting the best splits. Okay, so it's a very much try and error kind of a thing. Although it depends on your data complexity. So if your data is very much complicated in nature, then semantic chunking, as we see here, it's not a very it is not producing very good results. If you have sentences which have both the things included or multiple topics included in it, okay. But if your text has say very clear much distinguishing between two different topics, then you can definitely use semantic chunkers. वो क्या करेगा आपके अलग अलग टॉपिक्स के टेक्स्ट को अलग अलग रखेगा. एंड अगर आपके अलग अलग टॉपिक्स के टेक्स्ट अलग अलग रहेंगे तो आपको रिट्रीवर से रिट्रीव करने समय उसके ऊपर हेल्प होगी. तो यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ सिमेंटिक चंकर इंस्टेड ऑफ रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर जो हम लोग यूज करते हैं. देन दिस वाज वन ऑफ द बेसिक रैग एप्लीकेशन जिसमें मतलब अगेन ये सब ऊपर वाली चीज है जिसमें हम लोग आई मीन दीज आर ऑल दी demo examples I created. I think these are very not very much similar to the upper one. तो ये इसमें हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग वही पीडीएफ डाल रहे हैं वापस अंदर. ओके, हम लोग अगेन उसको जैसे मैंने बोला था आप लैंगचेन के साथ काम कर रहे हो तो यू हैव टू स्पेसिफाई द डेटा इन लैंगचेन कंपैटिबल फॉर्मेट विच इज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. तो इसके लिए हम लोग इसको नॉर्मल टेक्स्ट करके रीड नहीं कर रहे. हम लोग इसको लैंगचेन एक्सटेंशन पाई पीडीएफ लोडर के साथ रीड कर रहे हैं. वी आर बेसिकली ट्राइंग टू लोड द डेटा. देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर जिसमें I mean, this is one sort of text splitter. आप यहाँ पे दूसरा भी splitter यूज कर सकते हैं. I'm just giving you a basic prototype of RAG जो मैंने ऊपर भी दिया था, but this is like with the help of manual prompt. Okay. यहाँ पे again I'm making use of Chroma. I'm making use of embedding model जो आपके queries को and चीजों को save करता है. And then I'm making this prompt. I'm just asking, like saying him that answer the following questions on the basis of provided context. I'm just listing the context here. I'm just basically listing the question here. Then I'm just integrating all these things into the prompt template. जहाँ पे I'm mentioning the template, I'm just mentioning like what are the input variables. So this is a different style, right? हम लोगों ने ऊपर जो देखा था where we kind of created some sort of a chain with the help of string output parser, LLM, prompt. Here हम लोग prompt template create कर रहे हैं. Okay. यहाँ पे we are making use of retriever in order to extract the top 5 documents. Here you can change this document number to anything of your choice, and then you can think of using Koha re-ranker on the top of that. These are these results which you are getting, and then I'm just making a retrieval Q&A. It's a very standard prototype. ये अगर आपको कोई basic application use करना है मतलब बनाना है and in no time तो आप इस format को as it is copy करके use कर सकते हो. This is a very healthy code. आपको ये फटेगा नहीं code, आप use कर सकते हो इसको. And this is the question, what is RAG? ये बहुत straightforward question है, मतलब मैंने कुछ पूछा नहीं है. तो इट गेव मी एक्चुअल आंसर. अगर आपको ये टॉप डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने हैं तो यू हैव टू लाइक मेंशन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर. अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हो चेन टाइप में तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे. समटाइम्स इट इज लाइक कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी देखने होते हैं कि इसने टॉप 5 जिसको कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है इसने क्या लिया है वो कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो इसके लिए रिटर्न स्कोर डॉक्यूमेंट्स 2 आपको देना इंपॉर्टेंट है. तो इट विल बेसिकली स्टोर ऑल दिस आंसर्स इन दिस Q&A चेन क्वेरी. तो बेसिकली मतलब रिजल्ट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल थिंग्स होती है. तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट
which you will be able to see. तो मैंने टॉप 5 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए थे, तो अगर आप देखोगे तो ये मेरे टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे दिख जाएंगे. सॉरी. So basically, this is the actual answer. Okay. And these are the retrieved documents which it is getting. So we can just think of applying Koha re-ranker on top of these documents. So for that, you are supposed to retrieve these documents. So अगर आपको Koha re-ranker लगाना है उसके ऊपर, so basically you can just write this code and apply the Koha re-ranker in order to get the top डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे मैं डॉक्स क्या पास कर रहा हूँ. दीज डॉक्स आर बेसिकली दी सोर्स डॉक्यूमेंट्स. मुझे 5 डॉक्यूमेंट जो मिले थे मैं उसको ही पास कर रहा हूँ. आप टॉप 30 ले लो, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, इट विल टेक मोर मनी, बट आई मीन आप टॉप 30 को लेके फिर उसको री रैंकिंग करके टॉप 2 निकाल लो, जो एडवांस रैंक में करना चाहते थे हम लोग. उसके लिए हम लोग देयर आर मल्टीपल मॉडल्स यू कैन मेक यूज ऑफ. देयर आर री रैंक मल्टीलिंगुअल V3 भी है अभी लेटेस्ट पॉसिबल, मैंने V2 यूज किया है. You can make use of these top re-rankers in order to get the best answer. ओके, तो दिस माइट बी अनदर केस जहाँ पे आप एडवांस रैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो. ये बहुत सिंपल प्रोटोटाइप है. आपने ये वाला कोड रन किया, उसके बाद आपने कोहर एपीआई यूज करके री रैंकर वाला कोड रन किया, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दी रिफाइंड रिजल्ट्स. आप इसको स्ट्रीमलीट का इस्तेमाल करके यू कैन जस्ट क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एप्लीकेशन. ओके. सो अगर आप देखोगे टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे रैक की बात करेंगे, क्वेश्चन हो रहा था व्हाट इज रैक. तो अगर आप देखोगे तो जैसे वो टॉप क्वेश्चन से हटता जाता है ना, वैसे उसके रिस्पॉन्सेस है वो वेग बनते जाते हैं. ओके. एंड देन इट इज नॉट दैट यूजफुल इन केसेस ऑफ वेरी मच कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. तो आपको इसके लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप टॉप 30 यूज करो. टॉप 30 में से टॉप 3 को यूज करो, मतलब जो रैंकर्स है वो. करेक्ट. यहाँ पे मैंने टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स यूज किए, तो वही मेरा कॉन्टेक्स्ट था, उसी में से मेरा आंसर निकलेगा. तो टॉप 5 में इन्फॉर्मेशन कम भी रहा तो मेरा आंसर इतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा. बट सिंस आई हैव कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, आई हैव मेड यूज ऑफ लेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यू कैन मेक यूज ऑफ 10 और 15 डॉक्यूमेंट्स, टॉप डॉक्यूमेंट्स. आपके एलएलएम को उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. बट देयर अगेन देयर आर कॉन्स ऑफ दैट. कॉन्स क्या रहेंगे बेसिकली. आपका जो कंटेक्स्ट होगा इट माइट बी इररिलेवेंट. तो आप वो टॉप 15 को डायरेक्टली मतलब एलएलएम में पास कर रहे हो, इट माइट नॉट बी करेक्ट चॉइस. आपको इररिलेवेंट आंसर भी मिल सकता है उसमें से. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप टॉप 15 या टॉप 30 को सिलेक्ट तो करो फर्स्ट स्टेज पे. उसके ऊपर आप कोहरी रैंकर लगाओ और उसमें से आप फिर टॉप 3 या टॉप 4 को यूज करो और उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट करके फीड करो. एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ओके. सो दिस ट्राइज टू कवर सम सॉर्ट ऑफ बेसिक रैंक. एडवांस रैंक मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कैसे आप वर्क कर सकते हो. मॉड्यूलर रैंक के जो भी आपके थोड़े बहुत मॉड्यूल्स थे, आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग देम थ्रू द कोड. So this is about the basic understanding of RAG. I will try to, walk you through one code, which is this is basically a RAG application. So I have multiple choices. I had like मैं Amazon Bedrock पे भी इसको implement करने का कोशिश कर रहा था. I was trying to prove it, but then I like stick to a very basic prototype. Okay. ये like you will be finding it very much helpful at a very say if you are a kind of a beginner in the RAG field. If you were looking for some advanced applications, I will try to come up with some sort of advanced content. I will just post it in the course forum only. Don't worry about that. But since this course was very much, about introduction in RAG, I stick to the very basic prototype. तो जो सब के लिए आसान होगा समझने में एंड थिंग्स विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैंने वो वाला प्रोटोटाइप यूज किया है. तो आई हैड मेड यूज ऑफ लाइक Q&A answering assistant of what do you say OpenAI and कोहरे सॉरी लामा 3 का मैंने यूज किया है वो लामा में से. ओके. सो बेसिकली ये कोड में होता है कि आई विल जस्ट क्विकली वॉक यू थ्रू द कोड. अगेन आई मीन कोड इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स. ये मेरे एक्चुअली कंपनी में मैंने इस केस स्टडी का इस्तेमाल किया था. ओके. सो आई मीन आई थॉट ऑफ sharing the same with you. And this is a very basic thing, so you can use or deploy this thing. what do you say, आप खुद भी कर सकते हो इसको. आपको इसके लिए कोई भी मतलब अलग अलग टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है. तो इसमें ना देयर वेर टू पार्ट्स. वन इज द LLM पार्ट, अदर इज द UI पार्ट. Okay, so for UI part, I basically made use of HTML CSS. तो इसमें it is taking care of all sort of styling of the
विंडो, मतलब आपका जो आंसरिंग सिस्टम होगा उसका विंडो का साइज, उसका कलर, उसमें अगर आप कोई आइकन्स यूज करोगे तो आई मीन व्हाट शुड बी द कलर एंड ऑल द थिंग्स. सो बेसिकली दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स which are very much related to the style. तो ये बेसिकली यूआई का पार्ट है. Okay? तो इसमें वी हैड ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, लाइक हम लोगों ने कलर चेंजेस करके देखे थे, विड्थ चेंजेस करके देखे थे इन ऑर्डर टू कम अप विद अ नाइस यूआई. ये बॉट का टेम्पलेट है, वो यूजर का टेम्पलेट था. सो नो, इट्स नॉट, इट्स अ जनरल सीएसएस. यूजर टेम्पलेट इज बिलो दैट. सो दिस इज बेसिकली अ यूजर टेम्पलेट. इसमें हम लोग बेसिक सीएसएस यूज कर रहे हैं, हम लोग एक इमेज दे रहे हैं. तो आपका जो मतलब आइकन होगा, उस पे यू विल बी एबल टू सी दिस इमेजेस एंड आई विल जस्ट शो यू इट्स डेमो. दिस इज वन पार्ट ऑफ यूआई. देन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल कोड. ओके, तो एक्चुअल कोड में ये इसका पर्पस क्या है इस एप्लीकेशन का? इट विल ट्राई टू क्रिएट a Q&A answering system where you can just upload multiple documents. You can just process those documents there and you can just ask questions on the basis of those documents. Okay. So यहाँ पे there are multiple parameters. There is this chunk size, there is this chunk overlap, then this is persistent directory. I will just take you through all these documents. Chunk size is basically आपको data को कौन से size पे split करना है. Chunk overlap is, as I told you, if you are using recursive chunk splitter या फिर कोई भी आप splitter use करते हो, how many overlapping chunks you want to see. Then this is the embedding model. All this information I have already stored in the environment file. This is environment file. This is the .env file जहाँ पे मैंने सारे keys वगैरह रखे हैं. So I'm just extracting or pulling all these things from there. Then for data ingestion, I'm making use of this LangChain community document loader. So उसमें से I'm making loading the CSV loader, PDF loader and text loader. तो आपका जो भी document आप submit करना चाहते हो, that could be in CSV format, PDF format or text format. Okay, this is as simple as that. You can obviously incorporate multiple other formats as well, but like this is a very straightforward prototype जिसमें आप PDF and CSV के साथ interact करना, it will be a better choice. Okay. देन ये बेसिकली एक फंक्शनल कोड है जहाँ पे आप क्या करते हो कि यू विल ट्राई टू नो वर्क ऑन द इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट. अभी अपना यूआई कैसे दिखता है, जस्ट ट्राई टू शो यू हाउ यूआई लुक्स लाइक. यस. तो बेसिकली जो मैंने सीएसएस का पार्ट बता रहा था ना, वो सब मतलब ये इसका विंडो, देन यू हैव दिस इमेजेस, ये कैप्शंस, वो सब चीजें मतलब स्ट्रीमलेट एंड सीएसएस के थ्रू आप कर सकते हो. यू कैन मेक दिस बॉट लुक एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल. So basically there is this option where you can ingest all the files. Okay, it can be like up to 200 MB is the limit. You can make use of PDF, XLSX and CSV documents. And then you can just ask the questions. I will just take you through that part after explaining the code. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? It is a code which is written for loading a single document. So basically आपका जो भी आप document feed करना चाहोगे, that basically you can just process that document with this kind of formatting. These are very basic formattings where you are basically making use of LangChain doc loader. और आप उसके क्लास के हिसाब से, जैसे अगर आपने CSV पास किया तो CSV के लोडर के हिसाब से वो ट्रिगर करेगा. इट विल ट्राई टू स्टोर दैट डेटा. इफ यू आर pulling a PDF, then basically it will store the PDF. If you are pulling some text file, then वो text loader के class को call करेगा. And basically आप यहाँ से देख सकते हो loader mapping जो extension है. So आप पहले extension देखोगे, extension के हिसाब से अपने loader mapping फाइल बना के रखिए. तो अगर आप CSV दे रहे हो तो CSV loader का इस्तेमाल किया जाएगा, PDF दे रहे हो तो PDF loader का इस्तेमाल किया जाएगा, TXT दे रहे हो तो text loader का इस्तेमाल किया जाएगा, and so on. Okay, and then it will just try to load the results. एंड यस, अगर आपका फाइल एक्सटेंशन इसके अलावा कुछ तो है तो आपको वो एरर देगा कि अनसपोर्टेड फाइल एक्सटेंशन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी आर बेसिकली लोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ओके, देन दिस इज द सेकंड फंक्शन जहाँ पे it's basically loading all the uploaded documents. So if you have say multiple documents which you are what do you say sharing, तो basically होता क्या है, it will try to load all the documents one after each other. Since we are not dealing with a single document, we are dealing with the multiple documents.
ओके, सो जो आपका फंक्शन था लोड सिंगल डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा, ये आपका सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट को लोड करेगा, बट नाउ योर टास्क इज टू कम अप विद सच अ सिस्टम जहाँ पे इट इज प्रेडिक्टिंग मल्टीपल, सॉरी, इंजेस्टिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज कमिंग अप विद अ फंक्शन which is like ingesting all the, which is making use of this load single document function. तो आप जब भी 2 या 3 डॉक्यूमेंट पास करने की कोशिश करोगे तो वो इंडिविजुअली प्रोसेस होगा, एंड देन इट विल बी काइंड ऑफ स्टोर्ड, एंड देन देयर इज वन थिंग विच इज नोन एज प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार आपको दिखाता रहेगा कि आपको बेसिकली आपका जो इंजेक्शन है वो कितना मतलब एक्सटेंड तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, then this is a function which is used to get a PDF text. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ये फंक्शन स्पेशली PDF एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया था। तो आई मीन यू विल जस्ट ट्राई टू सी ऑल द टाइप्स की, आपके डेटा के टाइप्स कौन से हैं, यू विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस लोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऊपर आपने जो फंक्शन यूज किया था, आप सिर्फ क्या कर रहे हो यहाँ पे, you are basically trying to store the file names, you are trying to store the types, and you are basically storing all the results which are being populated over here। तो मैंने यहाँ पे 4 फाइल्स पास कर दी, तो मेरे रिजल्ट्स में मेरा जो फाइल्स है दोज विल बी स्टोर्ड, एंड देन देयर इज दिस वन पैरामीटर विच इज नोन एज इग्नोर्ड फाइल्स। तो अगर आपको किसी फाइल को पर्पसफुली इग्नोर करना है, यू कैन जस्ट मेंशन दैट इन योर डॉक्यूमेंट एंड यू कैन जस्ट इग्नोर दिस फाइल्स। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स जहाँ पे आपको वेक्टर स्टोर को डिफाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा वेक्टर स्टोर इज हियर एट द डीबी। ओके, एंड ये एक फंक्शन है जो चेक करता है कि मेरा वेक्टर स्टोर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, अभी एक आगे कहा कैसे काम आएगा, आई विल जस्ट टेल यू। तो बेसिकली दिस इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड in order to check कि आपका वेक्टर स्टोर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगेन इट हैज अ वेरी सिंपल कंपोनेंट्स जो चेक करते हैं कि ये पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो फिर इफ दिस थिंग्स एग्जिस्ट देन यू जस्ट कम अप विद दिस इंडेक्स फाइल्स व्हिच आर .bin and .pickle, and you try to check if like there are like more than 0 documents, I mean there are at least 1 document, then I would just try to see कि हाँ वेक्टर स्टोर एग्जिस्ट करता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉपुलेट दिस लिस्ट इंडेक्स फाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन कि ये मेरी जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है, एंड देन आई एम जस्ट रिटर्निंग इफ माय वेक्टर स्टोर एग्जिस्ट और नॉट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इट्स गुड, इफ डज नॉट एग्जिस्ट देन यू हैव टू क्रिएट द वेक्टर स्टोर बाय योर ओन। ओके, तो विल जस्ट ट्राई टू सी उसको कैसे क्रिएट करते हैं अगर नहीं है तो ये बेसिकली अनदर फंक्शन है जिसमें हम लोग टेक्स्ट चंक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट स्प्लिटर रिकर्सिव चंक कैरेक्टर स्प्लिटर का यूज किया है। यू कैन फील फ्री टू यूज एनी ऑफ द स्प्लिटर यू वांट। आप सिमेंटिक स्प्लिटर यूज कर सकते हो, आप मैनुअल स्प्लिटर यूज कर सकते हो, आप लैंग्वेज बेस्ड स्प्लिटर यूज कर सकते हो, मल्टीपल स्प्लिटर, यू कैन मेक यूज ऑफ ऑल द स्प्लिटर्स। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अपना जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट में स्प्लिट हो जाएगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में चंक्स में स्प्लिट हो जाएगा। Then this is the code where basically I'm trying to like get my vector store। तो vector store अगर आपको निकालना है बाहर तो उसके लिए this is the code। तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, I'm trying to define 2 मॉडल्स। यहाँ पे आप अपने n नंबर ऑफ अदर मॉडल्स डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली एक फंक्शनल कोड है। जो मैंने आपको बेसिक रैक का प्रोटोटाइप दिखाया था वो फंक्शनल प्रोटोटाइप नहीं था। ओके, उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये भी सेम ही चीजों को इस्तेमाल करता है बट इट्स लाइक अ फंक्शनल प्रोटोटाइप। तो आप इसको एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, इट इज रिप्रोड्यूसिबल एंड यू कैन मेक लॉट मेनी चेंजेस इन बिटवीन। सो आप यहाँ पे स्प्लिटर्स चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल के मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हो। मैंने 2 ही यूज किए, ओपन एआई और कोर एम्बेडिंग्स यूज किया। यू कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अदर एम्बेडिंग मॉडल्स एज वेल, एंड देन बेसिकली यू विल गो टू दिस लूप। ये लूप क्या करता है आपका, इट विल ट्राई टू सी आपका वेक्टर स्टोर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या दे देगा आपको कि अपेंडिंग टू द एग्जिस्टिंग वेक्टर स्टोर जो मेरा है यहाँ पे डीबी। ओके, एंड देन बेसिकली मैं क्रोमा में जा रहा हूँ, मतलब मैं क्रोमा मेरा वेक्टर डेटाबेस करके चूज कर रहा हूँ। यू कैन मेक यूज ऑफ फाइस एज वेल, there are multiple other vector stores as well, so I told you this code is entirely reproducible। You can just make use of different vector store as per your convenience। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स मेरे जो है बेसिकली वो मेरे को कहाँ से मिलेंगे, गेट टेक्स्ट चंक से। so, ये फंक्शंस बेसिकली एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। तो मैंने गेट टेक्स्ट चंक से मेरे जो ये स्प्लिटेड डॉक्यूमेंट था उसको मैंने बाहर निकाल दिया और मैंने उसको टेक्स्ट में स्टोर कर दिया। तो वो मैं बेसिकली मेरे डेटाबेस को अपेंड करते जा रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपके पास एक एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस रहेगा, उसके ऊपर आप कोई तो नया डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो। सो दिस प्रोसेस इज डन थ्रू दिस कमांड।
तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक डेटाबेस आपके पास है एंड देन यू आर बेसिकली एडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इनटू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप नया वेक्टर स्टोर बनाओ। ओके, तो नया वेक्टर स्टोर बनाने के लिए भी प्रोसेस सेम है, आप टेक्स्ट बनाओगे, मतलब ये आपका एक्चुअल डेटा है, आप डेटाबेस बनाओगे एंड देन यू बेसिकली विल क्रिएट द न्यू डेटाबेस स्टोर। ओके, देन दिस इज द कन्वर्सेशन चेन। अभी जो मैंने आपको लाइक बेसिक प्रोटोटाइप दिखाया था उसमें आई डिड नॉट क्रिएट एनी कन्वर्सेशन चेन। तो कन्वर्सेशन चेन ये कंसेप्ट क्या होता है कि आप जब भी कॉन्वर्सेशन करते हो ना तो यू वांट योर LLM टू रिमेम्बर ऑल सॉर्ट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री एज वेल while communicating with your LLM, right? तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कन्वर्सेशन चेन। तो ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो रिट्रीवर का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे आप बेसिकली रिट्रीव करते समय यू कैन जस्ट सेट योर टारगेट चंक्स टू एनीथिंग। आई मीन मैंने यहाँ पे 4 सेट किया है, मतलब टॉप 4 डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करूंगा मैं। आप यहाँ पे टॉप 15 इस्तेमाल कर सकते हो एंड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दिस कोड आप इसके ऊपर क्वेरी रैंकर यूज कर सकते हो। तो मतलब आप पहले यहाँ पे ये स्टेप पे आप टॉप 15 एक्सट्रैक्ट करो, इसके ऊपर क्वेरी रैंकर डाल के टॉप 2 या टॉप 3 इस्तेमाल करो। ओके, देन बेसिकली आई एम मेकिंग यूज ऑफ LLM, आई एम डिफाइनिंग विच आर माई LLMs। तो मैंने ओपन एआई और लामा 3 यूज किया था। तो आई टोल्ड यू लाइक ये फ्री है, ओलामा के थ्रू मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। एंड अगर इन दोनों में से मेरे को दूसरा कोई मिल नहीं रहा है तो आई कैन बेसिकली से दैट मॉडल टाइप इज नॉट सपोर्टेड एंड यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ डिफरेंट। अभी ये मैंने चेंज नहीं किया है, ये एक्चुअली दिस वेर माई POC का मॉडल्स थे तो मैंने उसको वैसे ही रखा था। तो हाँ, आई मीन यू कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स एज वेल। हाँ, तो बेसिकली ये जो पार्ट है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ चेन जहाँ पे आप हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो यू आर बेसिकली मेंशनिंग दैट योर कॉन्वर्सेशन शुड रिमेंबर सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट शुड रिटर्न ऑल दी मैसेजेस। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक मैसेज डाला उसका आंसर मिल गया, उसके बाद आप दूसरा मैसेज डालोगे तो पहला मैसेज दिखेगा, उसके नीचे दूसरा मैसेज आएगा। दिस इज हाउ यू कॉन्वर्स, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आप एक मैसेज टाइप करते हो फिर पिछले वाला सब गायब हो जाता है, ऐसा नहीं करते हो आप, राइट? एंड वो आपके मेमोरी में भी स्टोर होना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द kind of a Langchain attribute which you are going to use for creating a conversation kind of a chain. Okay, इसमें आप LLM को specify करोगे, then basically you will be making use of conversational retrieval chain. You are going to mention the memory, you are going to mention the retriever and so on, and then you will be getting the conversation chain. तो यहाँ पे अपना बेसिकली LLM का पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो चीजें हैं दीज आर सम सॉर्ट ऑफ यूजर क्वेरी इंजेक्शन एंड बेसिकली वो UI की तरफ थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो ये स्ट्रीमलेट का पार्ट है। स्ट्रीमलेट में मैंने यहाँ पे टाइटल दिया था जनरेट इनसाइट, यू कैन जस्ट मेंशन इट एज यू वांट। पेज आइकन आप खुद से दे सकते हो, आप मेरे इसमें देखोगे तो मैंने ये बार चार्ट दिया था। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट लुक लाइक एन एनालिटिकल टूल। सो आप खुद से कुछ भी दे सकते हो। देन ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना, दिस विल हेल्प यू टू steer the conversation. What I mean by steering the conversation is you can basically आप स्ट्रीमलेट के थ्रू इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक यू आर जस्ट मेंशनिंग आपका यूजर क्वेश्चन जो है वो इट विल बी स्टोर्ड इन अ वन काइंड ऑफ अ डायलॉग बॉक्स। देन देयर इज वन सॉर्ट ऑफ चैट हिस्ट्री के लिए प्रोविजन इज मेड देयर। then you can just make use of these templates in order to some sort of steer the conversation window navigation. Okay, then ये जो पार्ट है अगेन दिस इज नॉट दैट यूजफुल। यहाँ पे हम लोग लोगो ऐड कर रहे हैं, तो आप खुद से मतलब लोगो ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सब मतलब एस्थेटिक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ LLM ऐप। ये आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, सब टू यू। देन दिस इज अगेन CSS पार्ट जो है वो अगेन मतलब साइड बार की विड्थ कितनी है वो सब चीजें। सिंस द पॉइंट इज इफ यू आर trying to showcase this application to some sort of advanced level management, then आप सिर्फ उस पे LLM पे काम करके चीजें नहीं कर सकते। यू हैव टू कम अप एंड क्रिएट अ वैलिड फ्रंट एंड एज वेल। ये हम लोगों ने उस टाइम पे किया। एंड या सो आई थिंक दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर प्रोजेक्ट। ये जो है वो बटन्स वगैरह बनाता है। ये अपलोड वाला बटन है, देन दिस इज प्रोसेसिंग वाला बटन। जब भी आप प्रोसेस करने सिलेक्ट करोगे प्रोसेसिंग करेगा।
यहाँ पे बेसिकली सारे ऑपरेशंस होते हैं यूजर क्वेरी पे। अगर आप यूजर क्वेरी डालते हो उस बॉट में, तो सबसे पहले वो पीडीएफ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, आपने जो भी फाइल्स अपलोड की है उसमें से। वो टेक्स्ट को टेक्स्ट चंक्स में स्प्लिट करेगा विद द हेल्प ऑफ गेट टेक्स्ट चंक्स फंक्शन। देन वो वेक्टर स्टोर को देखेगा, वेक्टर स्टोर है तो वो एग्जिस्टिंग में अपेंड करेगा, नहीं है तो नया वेक्टर स्टोर बना के बेसिकली उसमें अपेंड करेगा। एंड देन इट विल मेक यूज ऑफ गेट कन्वर्सेशन चेन, जिसमें आपके पास रिट्रीवर है, कॉन्वर्सेशन के डिफरेंट आइकन्स एंड सो ऑन, एंड इट विल बी एबल टू गिव यू द आंसर। तो स्टिमुलेट को अगर आपको रन करना है एप्लीकेशन को, तो इन दैट केस यू आर सपोज टू यूज दिस कमांड। तो by m stimulate run, and you can just mention the name of your file, and then perhaps I mean it will take you the to the file. तो ये मेरा फाइल है, सॉरी ये मेरा यूजर इंटरफेस है। if I just say upload any of the documents, say for example attention is all you need, I have, okay, so if I just press on the process button, it is processing. सो अगर आप देखोगे कोड में, तो यहाँ पे विल बी एबल टू सी ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी आपका चल रहा है ना वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अरे यार, इट थ्रू मी एन एरर। ओके, व्हाट इज द इशू? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाई इट इज throwing me an error. It's working pretty much fine. Why the list index is going out of? I might have changed the embedding, तो उसकी वजह से वो लोड नहीं हो रहा है। Okay, so it got loaded. I think there was some issue with some sort of tokens. So I mean, it was not able to invest, but ये फाइल अभी यहाँ पे प्रोसेस हो गया है। This file was related to that RAG modular RAG वाला question. So if I just type in here, what is modular RAG? Again आप अगर यहाँ पे जाओगे, तो it will try to show you all sort of working. यहाँ पे screen में आ रहा है। तो वो जो CSS वाला जो मैंने किया था ना, वो आइकन वगैरह वो सब यहाँ पे दिखता है, उसकी विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हो। Then now if I want to ask another question, say what is advanced RAG? तो ये कॉन्वर्सेशन स्टीयर होता है, मतलब एक के नीचे एक आएगा। इट्स नॉट लाइक वो एक के मतलब ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये एडवांस रैक के ऊपर आ गया। एंड यहाँ पे मैंने दोनों भी मॉडल्स यूज किए, वन इज ओपन सोर्स, वन इज पेड वन। यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ योर चॉइस। यू कैन ingest ऑल सॉर्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। तो ये दूसरा जो डॉक्यूमेंट था, दैट वाज द कोर रैक पेपर। इफ आई जस्ट आस्क अबाउट व्हाट इज रैक, तो अगर आप देखोगे ये पूरा कॉन्वर्सेशन क्लियर हो रहा है, एक के नीचे सारी चीजें मेमोरी में स्टोर हो रही है। दैट इज बेसिकली व्हाट इज रैग एंड हाउ। तो ये बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर पेपर में से था। आप अपने हिसाब से आप जितनी भी फाइल्स अपलोड करनी है आप कर सकते हो।
And this is very basic and easy prototype. आप इसको replicate कर सकते हो and you'll be able to showcase a good demo जहाँ पे आप free source models भी use कर सकते हो as well as open source models भी use कर सकते हो. So I think that's it. For some, if you are feeling कि अरे I wanted to see some of the advanced applications, so we'll try to cover it in some of the next sessions or some of the next courses. Or if possible, I will just upload code content for that as well in the course forum. So here my intent was to cover all sort of advanced rack, all sort of modular rack, and come up with a basic or say standard prototype with which you can create some sort of a rack project. Okay. There are n number of dimensions to it. You can come up with n number of new modifications. आप उस पे re-ranker लगाओ, आप उस पे modules लगाओ. I have like suggested all sort of individual things to you, right? You can just incorporate or ingest all these things or integrate all these things in the current prototype, and that will take you to the advanced application. For deployment, you have multiple options. Again, maybe because this was a basic demo, I just chose to stick to the Streamlit. You can just deploy this on different cloud tech stacks as well, and so on. I think so. This summarizes everything. So I will just stop here. I will just try to address few of the questions. Meanwhile, you can just fill that feedback form. Let me just. So your feedback form भर दो. This is very important. Let me just stop sharing the screen. I'll try to like, answer all these questions which you are pending. Okay. Which type of rack system have you used? So it was a, sorry, I did not get your question. Like, from a rack system, what are you trying to ask? If you can just elaborate this question, it would be easy. So can reverse engineer it as output? Yeah, so hide is some, I mean, hide तो reverse engineering के लिए मतलब वो approach use किया जाता है. वो hypothetical document embedding जो बोला था. Other things, I'm not sure, like this question, I'm not sure you're asking for which particular method. आपका कोर्स आ रहा है फ्यूचर में यार, वो तो तुम्हारे फीडबैक पे डिपेंड करेगा. I'm not pressurizing you, but just saying if the feedback is good, sir might think of giving me some more chances. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ज्यादा अप्लाइड कोर्स की बात करेंगे, उसमें हम लोग थियरी की बात नहीं करेंगे. डे वन से हम लोग सिर्फ फंक्शंस एग्जीक्यूशन उस पर बात करेंगे. इसमें हम लोगों ने बहुत हेवी थियरी कवर करने की कोशिश की थी. आई होप यू लाइक माई अटेम्प्ट. आई विल प्रोवाइड सम एडवांस मटेरियल्स इन द ग्रुप एज वेल. मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि कोई भी बेसिक बंदा अगर उसको रैक पढ़ना है तो उसको एडवांस रैक के कुछ टेक्निक्स पता होने चाहिए, मॉड्यूलर रैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो पता होना चाहिए. एंड यू शुड नो हाउ टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ रैक एप्लीकेशन. ओके, देन देयर आर एन नंबर ऑफ डाइवर्सिफिकेशंस टू इट. कब आ रहा है मेरा कोर्स यार? वो तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्री कोर्स, राइट? तो मतलब बेसिकली अगर इफ द फीडबैक ऑफ दिस कोर्स इज गुड, then perhaps sir will give me another chance and then perhaps we can meet again for some advanced courses. ये टाइम हम लोगों ने बेसिक रैक के बारे में बात की, हम लोग नेक्स्ट टाइम और एडवांस रैक के बारे में बात कर सकते हैं और एडवांस डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं जेएनआई के. थोड़ा प्रैक्टिकल रखेंगे उस कोर्स को. विल नॉट ट्राई टू टच अपॉन थियरी. सो या इट डिपेंड्स, पता नहीं अभी मेरे को कब आएगा. But thanks, guys. I mean, I could see the names like Sain Monk, then Shubham, Prajwal, uh, Soumya, Abhishek. Sorry if I missed some, but many of them you were there in almost of the all the lectures. So I really thank you for attendance, and I hope I did not disappoint you. If I have done, I'm so sorry. Uh, I thought of giving my best.
since it was my first experience teaching someone in the online forum. But I hope I could contribute. Uh, yeah, thanks, Umar. Just fill that feedback form, and then perhaps you can wrap up with this course. I know there are a few pointers which I was not able to cover. You can just post it in the forum. I will try to answer them after today, once this course gets over. And I hope that we will meet for like covering some advanced content in future courses. So let me know your feedbacks. Let me know your comments. I'm on the LinkedIn. Feel free to connect with me on LinkedIn, and perhaps you can discuss over there. Uh, thank you. Yeah, thank you, Shubham. So that's it from my end. Perhaps if you have filled the form, just let me know all the negative feedbacks precisely. पॉजिटिव फीडबैक्स पता नहीं चलते तो भी चलता है, निगेटिव फीडबैक्स पता होने चाहिए आपको, तो अच्छा आप नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकते हो. तो अगर आपको कोई निगेटिव फीडबैक है तो डू लेट मी नो पर्सनली. यू कैन जस्ट टेल मी ऑन लिंक्डइन. I won't take it in a negative way. So just let me know. And yeah, thank you for all the people. So मैं Biswajit, Abhishek, Shubham, Umar. I hope that we will collaborate for advanced content in future. So thanks a lot. If you are done, you can just drop off. Uh, just feel free to fill that form. Then we can just wrap it up. Okay. I think there are only 9 participants. I hope that you guys have filled the form. So I'm just ending the session. Mention all your feedbacks. Thank you guys. Bye.